आ गया भाई. Welcome back to another live stream, everyone. Playing LANoire today again. भाई कल GTA 6 का एक्सटेंडेड लुक देख के मजा आ गया. बड़ा ही प्यारा था भाई, बड़ा ही प्यारा था. That was just tip of the iceberg. आ जाओ गाइस, लेट्स बिगिन द गेम LANoire. बाकी भाई सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी बहनों को. Step back, LAPD. या बॉक्सिंग मैच चलना था, फिर कुछ हो गया अचानक से. What's going on? That son of a bitch Hammond has jammed the door. And who are you? Carlo Arcaro, I'm his manager. I'm his trainer. Interesting attitude to have towards a victorious athlete. Victorious? We had an arrangement. We had a goddamn arrangement! That limey bastard was paid to take a nap. He reneged. And you were out of pocket? Damn right. Me and a couple of hundred other people. Stand aside. He squeezed out the window. I'll put an APB out on him. Why would we do that? He won the fight fair and square. To prevent him from getting clipped. He was paid to flop. There was big money riding on this So are we fight. here because you lost money, or because we're investigating a prize-fighting racket? Very funny. Look around and see what you can find. Which is... मतलब फिक्सिंग करी गई थी कि फिक्सिंग ये थी कि उसको हारना है ये मैच, लेकिन भाई वो बंदा अपनी स्किल्स पे के नाम पे फिर भी जीत दिया. और भाई क्योंकि उसने फिक्सिंग के खिलाफ चला गया ना, वो फिक्सिंग एक्सेप्ट करने के आते, इसलिए उसको असैसिनेट किया जा सकता है, इसलिए भाग गया. ऐसा सीन है, समझा मैं. राम राम. हेलो गौरव भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. क्या हाल है? Hammond's locker. Over by the pin board, second from the end. GTA 6 fucked up brain. भाई मजा आ गया, वो मजा आ गया भाई. डिटेलिंग दिख रही है गेम में, के दिख रहा है भाई गेम. There's a phone number we can run by R&I, plus a bunch of names and odds. You're not the only one who likes a flutter, Roy. मैं इंस्टॉलिंग GTA 6 अब वो स्ट्रीम This is going to करूंगा. help us. करो भाई. Congratulations, your PC is going to get hacked again. हमने भी बना दिया, बहुत बढ़िया. You look troubled. I'm in a jam, Doctor. Can I help, Courtney? Is it money? No, Doctor. That's okay. Do I have your professional confidence? Whatever you say, we'll never leave this room. I talked some of the guys in my old unit into doing something, and it's gone wrong. I guess I did it for the wrong reasons, for short-term gain. We came home from China on the Cool Ridge. The morphine robbery. That was us. I thought I could get the guys a fair share. Some sort of benefit for the sacrifices that they made in the war. Hello, Sahil bhai, welcome. क्या हाल है? Those guys deserve it, Doctor.
Oh, I'm sure they do, Courtney. But the deserving aren't always rewarded. Tell me about it, Doc. We shifted our stuff onto this mob-connected guy, and it's been turning up all over town. It wasn't meant to be like this. The presumption was rather naive, Courtney. I know that now, Doctor. But people are dying. Might I venture a few questions? Sure. Do your अगर underworld chat पढ़ता सबकी contacts have all the morphine? No, they don't. We doled it out. Hope. RDR2 सॉरी गलती है GTA 6 लिख दिया भाई। RDR2 बहुत बड़ा गेम है भाई, बहुत बड़ा गेम है, लेकिन मतलब स्ट्रीम मतलब कर तो सकते हो, लेकिन पूरा स्ट्रीम करने में लंबा टाइम लगेगा। कैसा लगा गेम प्ले भाई? मैंने तो बता तो मैंने वो लिख तो शॉट डाल तो दिया, मेरे को तो मजा आ गया। कांट वेट टू प्ले LANoire भाई, मेरे को यार मजा आ गया भाई। दुकानों में दुकान के अंदर जब एंटर करते हैं ना कैरेक्टर, मेरे को दिख रहा है भाई वो जो कोल्ड ड्रिंक के कैन्स हैं, चिप्स के पैकेट है, वो पिकेबल आइटम की तरह दिख रहे हैं। वरना पहले क्या होता था गेम्स में ना कि वो एक फोटो की तरह बस पड़े रहते थे वहाँ पे, मतलब देख के ही पता लग जाता था कि वो बस पड़े हैं शो पीस के लिए, ऐसे उठा नहीं सकते। अब एक्चुअल में वो चिप्स के पैकेट उठा सकते हो और खरीद सकते हो। चिप्स को खाने से तुम्हारा क्या है, तुम्हारी हीलिंग भी हो जाएगी, बट ये भी कि तुम्हारी लॉन्ग टर्म तुम्हारा कैरेक्टर मोटा भी होगा अगर तुम अपनी डाइट खराब रखोगे। तो ये इन लोगों ने डाला, जिम का सिस्टम डाल दिया, जिम मार के तुम अपनी बॉडी एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो भाई। रियलिस्टिक इमर्जन डाल दिया गेम में। RDR2 में साइड एक्टिविटीज बहुत है भाई। इस गेम में तो मजा आ जाएगा यार। GTA 6 ये गेम भाई 100 घंटे के ऊपर जाएगा आराम से। We could control it. Are they pressing you for further allocation? That's the polite way of putting it, Doctor. I may be able to help you, Courtney. Thanks, Doc. It helps just to talk about it. I mean, I have a solution that will help you financially and salve your conscience. I'm all ears, Doctor. I will transact to take all the narcotic off your hands. And you can rest assured that it will all be medically administered. I will use the funds that I no longer require for the purchase of medication and invest them in housing developments. Housing? The developments in question are housing projects for former servicemen. Your return will come from the sale of the properties, and your investment will benefit those that you care for most. Does this arrangement meet with your approval? You're a magician, Doctor. मेन मिशन भी होंगे, यस इंक्लूडिंग साइलेंट। हाँ भाई एकदम जबरदस्त। 2 मंथ और हैं भाई, बस आने वाला गेम अपना GTA 6। You मजा better आएगा। find that cocksucker and you bring him to me. I feel bad too, Mickey. He guaranteed me he would take the flop. I guarantee that you will be fish food if you don't bring me. Roy, you out of pocket too? Mickey? Seems that way. Don't worry about it. My boys are out looking for him. Well, you'd better call them off. This is a police matter now. If anything happens to Hammond, I'll testify that you made threats against him. Who's the Greyhound? He's a frisky one, isn't he? Cole Phelps? Mickey Cohen. I know who he is, Roy. I, met his brother-in-law. I think you had the mixture pretty scared back there. भाई GTA 6 में बहुत बवाल चीज होने वाली है। Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, 1247. Phantom Blade और GTA 6 भाई। I need an address for the following phone number. Phantom Blade भी खेलेंगे, AL345. पक्का खेलेंगे। The address for the phone number is the Hotel LANoire, 6294 Leland Way, Hollywood. Thanks, ma'am.
You know the इसीलिए ये place? गेम इतना लेट हो गया। Flop house. Quarter भाई to night, भाई no questions इन लोगों ने asked. कोई जल्दीबाजी नहीं करी, ये लोग अपना पूरा टाइम लिया है भाई गेम देने में। ये लोग एक परफेक्ट गेम बना रहे हैं। गेम देखो ऑल दो चलेगा 30 FPS ही, क्योंकि भाई बहुत डिमांडिंग गेम है, बहुत डिमांडिंग गेम है। बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई उससे, एटलीस्ट ऑप्टिमाइज है भाई। आजकल की गेम में तो ऑप्टिमाइज भी नहीं होती, हक देती है रिलीज पे। रॉकस्टार अगर आज ही पीसी तक बनाया तो मज़ा आ जाता। टाइम लगेगा यार, पीसी के लिए बनाना और मुश्किल है ना। फैंटम ब्लेड ओनली 2 वीक है भाई। फैंटम ब्लेड ने ना मैं कहूँगा अपना नुकसान You करवा seem to have दिया। a pretty cozy relationship with Cohen. मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनका प्लेयर बेस क्या बोलते हैं एकदम खत्म ही हो जाएगा, बट उनका पता है Stompanato. ज्यादातर प्लेयर बेस अब ना रुक Do I गया note a है। hint of reprimand in your tone? अगर वो लोग फैंटम ब्लेड वाले अपना गेम ना अक्टूबर के स्टार्ट में ही डाल देते या सितंबर में जो ओरिजिनल डेट थी तब लाते, सही रहता है। इन लोगों ने अपना नुकसान कर दिया, फैंटम ब्लेड वालों ने अब अपना, इन लोगों ने बहुत भारी भारी वाला नुकसान कर दिया। अब ये जीटी के साथ जो क्लैश अप है ना, इसकी वजह से बहुत दिक्कत होगी इन्हें। 30 FPS टीवी में इतना, हाँ टीवी में तो इतना समझ भी नहीं आता। और मेन ये भी है ना कि 30 FPS स्मूथ है रॉकस्टार। और मैं कोई शौक हूँ भी नहीं कि 30 FPS था भाई। भी देखो GTA 5 भी PS3 पे आया था 30 FPS था, RDR2 PS4 पे आया था 30 FPS था, GTA 6 भी PS5 पे 30 FPS है। वो नेक्स्ट जनरेशन कंसोल में ये लोग चेंज करते हैं। RDR2 में इन लोगों ने इसलिए नहीं चेंज करा क्योंकि ये लोग GTA को मिल्क करने में ही लग गए थे। GTA 6 तो 60 FPS होगा अगली जनरेशन वाली कंसोल में, क्योंकि उसको तो ये लोग मिल्क करने वाले हैं अगले 2 डेकेड। हाँ यही कह रहा हूँ, जनवरी को डालते। जनवरी नहीं, जनवरी की भी नीड नहीं, मतलब थोड़ा GTA 6 के बहुत क्लोज ले आए ये लोग, थोड़ा दूर Talking to रखते। gangsters comes with the turf. बहुत क्लोज You फील हो should रहा try है। out Mickey's place. He's got a haberdasher's up on Sunset. भाई फैंटम ब्लेड पता है मैं कैसे खेलूंगा? अगर मैं डे 1 खेल पाया तो मैं वो गेम भाई दिन में 5 6 7 8 घंटे स्ट्रीम मारूंगा आराम से, क्योंकि वो गेम मैं नहीं चाहूंगा कि GTA 6 के साथ क्लैश अप हो मेरा। तेरी स्ट्रीम पर वाईटी फीचर आ रहा मतलब बताया, समझा नहीं मैं। बता वे हैप्पी चैनल से कहा किसी की कलाई खाली ना हो। यस यस भाई, मेरी तो चार See if he चार can get चार you है out of मेरे those पे। old man's clothes that you slink around in. It's a front for his illegal activities. It is that, but he does carry some very sharp suits. If it's okay with you, I'll stick with Brooks Brothers. That's that cop. Seems like a decent. तुम्हारी स्ट्रीम के नीचे लिखा बोल्ड फॉन्ट में वाईटी फीचर। ये मेरी स्ट्रीम के नीचे कहाँ पे यार, मेरे को नहीं समझ आया। हाँ इजी तो नहीं यार, नॉर्मल एटलीस्ट करूंगा। अगर डिफिकल्टी सिस्टम में लोग डाल रहे, नॉर्मल करूंगा, थोड़ा कॉम्बैट का डेप्थ भी लेकर मैं मजा लेना है। इजी बहुत आसान लगेगा। डे 1 यस भाई, डे 1 ही है भाई। ये लोग मुझे, मैं चाहता हूँ वैसे ये लोग एक चीज़ डाल दे रहे हैं GTA 6 में, लेकिन पता नहीं शायद नहीं डालेंगे क्योंकि ये लोग कभी नहीं डालते। और वो है सेंसरशिप का ऑप्शन। मतलब होता है ना कि गेम्स में कि तुम वो ऑन अगर कर लो तो गेम में अगर कोई बहुत ज़्यादा 18+ कंटेंट है तो उसे वो गेम वो कर देता है, क्या बोलते हैं उसमें, उसको थोड़ा हाइड सा कर देता है ताकि सेफ रहे तुम्हारी नज़र में। तो भाई मैं चाहता हूँ वो डाल दे, लेकिन मुश्किल ही है, रॉकस्टार वाले डालते नहीं है। मेरे को अपनी स्ट्रीम पे केयरफुल रहना पड़ेगा। वो न्यूडिस्ट टाउन जाते मुझे अपनी स्ट्रीम वो करनी पड़ेगी पॉज। वाई टीचर्स डीएम देख लेना, GTA का लीक देखो जो भेजा, बेटा भी देखता। दिस इज द लिस्ट ऑफ सेक्सुअल पोजीशन वेयर सेक्स विद हेल ना भाई, रुक रुक भाई, ये तो फॉरवर्ड मारूंगा मैं। ये यूट्यूब फीचर का मतलब क्या है भाई, मुझे जेन्युइनली नहीं पता।
भाई ये वाला तो फॉरवर्ड मार दिया दोस्तों को। हेल ना भाई, मजा आएगा भाई गेम में तो। व्हाट द फक वाज दैट? स्ट्रीमर मोड है ना अब? पता नहीं ये लोग डालेंगे कि नहीं गेम में, अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की। अब कोई न्यू गेम नहीं खेलेगा, ओनली जीटी खेलूंगा मैं न्यू गेम्स, लेकिन डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स। मतलब हाँ, कोई मैं बहुत महंगे प्राइस पे अब गेम नहीं खरीदने वाला। GTA 6 मेरी इन्वेस्टमेंट थी मेन इस साल की। तूने वैसे अब तक गैंग्स ऑफ वासेओ नहीं देखी? मैंने आज अनुराग कश्यप की 3 मूवीज देखी एक दिन में, देव दी, नो स्मोकिंग एंड सत्य। देख लूंगा भाई, उतर जा मेरे जरा। यार पता है मैं कब देखूंगा? ये मेरा GTA प्लस चल रहा है ना, ये LANoire और बुली कंप्लीट होने तो उसके बाद देखूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी मैं इसलिए नहीं देख रहा हूँ। GTA प्लस मेरा 16 सितंबर तक है मेरे पास अवेलेबल। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने डेज वेस्ट करूँ इधर उधर भाई। मैं चाहता हूँ कि GTA प्लस रहते रहते जितने गेम्स में मेरे को खेलने सारे कवर अप कर लूँ मैं। LANoire हो जाएगा, बुली हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं देख लूँगा मूवीज़। बंदर देखनी है अनुराग की, मतलब स्टॉमी से एक मूड में देख लियो तमीज से। हाँ देखूंगा, मुझे तो साइबरपंक एजरेनर्स भी देखना है। Yeah, what do you want? LAPD. We're making inquiries into the whereabouts of an Albert Hammond. No one here by that name. You sure? Sure, I'm sure. This isn't the sort of place where people use their real names. Take a look at the register if you don't believe me. She wants a 5-star goddamn wedding. भाई मेरा तो लड़की को देख के भाई खड़ा हो गया जो तुमने DM में भेजा है भाई। बढ़िया माल तो दिख रही है वो। GTA में तो सारी लड़कियां माल है। Okay, so look for prominent Tommies. That should narrow it down. Hey, don't mind me. Who's he hiding from? Winston Churchill. A very patriotic Englishman is staying in room 207. The old bulldog. Even at a flop house, Adley can't get out from his shadow. Look, you've seen the register. That's all the help I can offer. नहीं होगा कभी वो, क्या नहीं होगा? Door's unlocked. Son, you're a couple of slates short of a full roof. Looks like he's had a broad up here. Gives us angle if he has a real love interest. मुझे पता नहीं सुबह से कितने देख चुका हूँ, जीसी का पागल हो चुका हूँ भाई। है भाई वो इंटरेस्टिंग है, दिख रहा है भाई। इन लोगों ने $2 बिलियन लगाए हैं, सब दिख रहा है। Looks like Albert has been doing some homework. 11 grand would be a nice little nest egg. ऊपर से ऑनर सिस्टम डाल दिया। जीटी जैसे गेम में ऑनर सिस्टम कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन डाल दिया भाई। गेम अब और इमर्सिव है। हाइस्ट भी प्रॉपर प्लान करनी पड़ेगी भाई। मतलब पहले तो स्क्रिप्टेड होता था कि तुम एक तरह से हाइस्ट कर रहे हो, अब तो जहाँ तक है तुम्हारे पास काफी तरीके होंगे हाइस्ट करने के। मतलब 2 की जगह तो पास 5-6 तरीके होंगे। जैसे हिटमैन गेम में तुम एक ही मिशन बहुत तरीके से कर सकते हो ना, तो वैसे ही हाइस्ट के भी तरीके होंगे। तुम्हें अपना एग्जिट प्लान भी बनाना पड़ेगा, अंदर जाने का प्लान भी बनाना पड़ेगा। गेम बाकी तुम्हारा ऑनर सिस्टम ट्रैक करेगा ही, कितने तुमने इनोसेंट्स पे हमला किया, कितना तुमने एनिमीज पे हमला किया। मतलब ये गेम भाई मतलब तुम्हारी क्राइम लाइफ का एक्चुअल में कॉन्सिक्वेंस दिखाएगा। बाकी तुम लूसिया या जेसन बन के अगर किसी और लड़की या लड़के के साथ कुछ भी करोगे तो उन दोनों की रिलेशनशिप खराब होगी। आज सुबह एक दिन सीन बहुत हार्ड था, चला डूडा रिलोड। अरे एक डेटिंग सीन भी खेला, बहुत हार्ड के साथ 0 टाइम्स कर पाया भाई। एवरीबॉडी फाइनली सपोर्टिंग इंडी गेम, तो हम ऐसे ही करते हैं। Must have just missed him. Instaheat. Adrian Black's product of choice. Seems like a lifetime ago. Candy has expensive taste.
Albert has his work cut out for him. Who's Candy? Candy Edwards, the lady who filled out this coupon. Does Albert have somebody special? I didn't see anyone in his corner at the fight. आज तीनों पीक मूवी देख ली यार. आप पूरा दिन पीक की मूवीज देखते हो. I guess a fighter has plenty of time on his hands between bouts. All right, let's go after his girl. See if that gets us any closer. He must be heading home. You know, I hope he makes it. That crooked son of a bitch? No chance. All right, let's go after his girl. See if that gets us any closer. Let's go. 5-star goddamn wedding. भाई जितना तो पता है हम लोगों ने GTA 6 ट्रेलर में देखा है ना अभी वो टिप ऑफ द आइसबर्ग ही है. अभी जब गेम रिलीज होगा तो तुम्हें और चीजें देखने मिलेंगी और उससे पहले और भी ट्रेलर आएंगे. Hammond is over the hill. He's a punching bag for the up-and-comers. She knows his goddamn place. I think he knows. I think he worked out the place isn't L.A. He's punchy. His brain's going to mush. Snoop Dogg वाला मिशन भी खेल लिया जो हिटमैन में आता है. कैसा था? किस टाइप का था मतलब? Give me a कैसा लगा? break. Churchill is a fighter, Roy. Hammond didn't just scribble down the first name he could think of. So, you boxed in the Marines? Take the next left turn. We all did. Standard training. I can't imagine you ever played dirty. The only prize for taking a fall was 1,000 push-ups. We need to know which room is Candy's. You got a problem? LAPD, ma'am. We're looking for Candy Edwards. Apartment 7. You take the outside stairs by the parking lot and turn left at the top. You friends of the Italian guy? Italian guy? Yeah. Sleazy type? Gave his name as Carlo. I didn't like the look of him, but Candy has some funny friends. Thanks. This Candy broad must be as sweet as she sounds. All these gentlemen callers. भाई कुछ ज़्यादा ही मॉडिफाई कर दिया मैप और मिशन. मैंने सिर्फ एक टाइम प्ले करा विथ ओनली वन स्टोरी सो आई मीन नॉट एबल टू रेट या बट स्टिल 6 आउट ऑफ 10. ओके मेरा RDR2 हर बार ड्रॉप हो जाता है. इस बार कंप्लीट करने के बाद इंस्टॉल करूँगा. स्टार्टिंग से खेलूँगा इससे. भाई मैं तो कहूँगा ना गेम खेलने पे फोकस करना भले ही स्ट्रीम ना हो पाए. भाई वो गेम खेलने लायक है यार. वो गेम अब ड्रॉप करना बहुत गलत है भाई. वो गेम वैसा गेम ड्रॉप नहीं करना चाहिए. रॉकस्टार का भाई बेस्ट गेम है अब तक का. GTA 6 वाले ही टेक ओवर कर देगा इसे. अब पूरा ऐसे नहीं कर देगा वो टेक ओवर. बट ऐसे द ग्रेटेस्ट रॉकस्टार गेम एवर. उसे ड्रॉप नहीं करना. Give it up, Sounds bitch. like we're missing all the He's gone fun. fuck Get in both there, of us, Phelps. and you know where he's hiding. Now tell me where he is before I cut you. I told you I haven't seen him. Like hitting women! This isn't gonna end well for you, friend. Out cold, but breathing. Give her a minute and take a look around.
काफी मॉडिफाइड मैप है फॉर दिस मिशन, लाइक पूरे 2-3 लेवल ऐड किए मैप, लाइक लेवल मींस क्लोज। ओके ओके। RDR1 इज बेस्ट भाई। RDR1 की भाई एंडिंग ज्यादा अच्छी है RDR2 से, और भाई वो वाइल्ड वेस्ट की फील में भी बेटर है RDR2 से। Nasty weapon. All the Italians carry them. A real man uses his fists or a gun. Carlo here seems to have the same friends as Hammond. What are the odds on them all being bookmakers? नाम लिखा है भाई, काचिंग लिस्ट है किसको मारना है किसको नहीं करके। She's leaving town. स्नूप डॉग को और ज्यादा इमर्सिव बना सकते हैं, लाइक दे डिड विद एमिनेम, बट इट वाज नॉट बैड, लाइक मे बी कॉज एमिनेम कोलैब इज गुड बट इट फील्स इमर्सिव एंड गिव्स सेंस ऑफ रियल स्नूप डॉग। भाई ये लोग बढ़िया करते हैं भाई, अच्छा बनाते हैं। Don't think this is anything. It doesn't appear to be connected. Not everything here is going to be relevant. Single ticket. One way. I guess there isn't a lot for Albert in Ohio. Scania sails from New York. Take a seat, Miss Edwards. We have some questions for you to answer. Look, I haven't done anything wrong. Ever? I find that pretty hard to believe. Can you answer some questions now, Miss Edwards? Sure, I've had worse. I'll shake it off. We're trying to track down Albert Hammond. We have reason to believe he might be in danger. Do you know where he is? No, I don't. I'm over Albert. I haven't seen him. Save it for the suckers, Candy. Albert won big. He may not have told you, but you don't strike me as the type who leaves town when there's money to be had. Call me anything you like, Flatfoot. I'm done with this burg and all the cheap chiselers who live here. Do the names Harry, Mervyn, or Ray mean anything to you? Could be anybody. How the hell would I know? They're bookmakers, aren't they? Tell me the truth. How the hell would I know? Albert wrote his winnings down on a notepad in the hotel room. We found the odds in his locker. Who has the betting slips? That son of a bitch, Albert. Everyone thought he was dumb, including me. But he beat them all. That cooking, eating वाला एक part था उसमें बहुत बढ़िया था, but still it was not that good as it could be. It could have been better if the story of the mission was written with different views. अच्छा. You're leaving town, Miss Edwards? Yes, I'm going straight home. You're lying to me. Albert finally won a big fight. I say good luck to him. But you know where he is. Let me help him, Candy. Do all you cops run off at the mouth? Prove I know where he is.
Looks like I was mistaken. Albert is going home by boat as soon as he collects his winnings. I know you're going to meet him. Albert is going to collect nothing. He'll be lucky if he can get out of town in one piece. How will you fare any better? They already believe you're in on it. Hell, I know you're in on it. You can think what you want, Buster. I'll take my chances. I got a few errands to run, and then I say adios to this dump. Do you want to press charges against Arcaro? Just get him out of here. That's all I want. Get out, Carlo, you hump. And get rid of that pig sticker. You ever pull that thing on me, I'll shoot you like a dog. That bitch knows where Hammond is. She knows where my money's gone. My money too, tough guy. I'll handle this. Good luck, Miss Edwards. लाइक एमिनेम वाले मिशन में उन्होंने न्यू मैप बनाया था और एक लाइक प्योरली न्यू मैप विद प्योरली न्यू पजल इन दैट न्यू मैप विद इट ओन न्यू मैकेनिक्स एंड द न्यू एमिनेम गेव अस मिशन टू किल ओल्ड एमिनेम. ओके, अगर इस तरीके से यहाँ लाइक कुछ डिफरेंट करते जे फ्रॉम जस्ट अ टारगेट टू किल हिम तो और बढ़िया होता है. 6 out of 10 now I have not played all missions through. It was my first draft training. I played the mission only one time. खेल के देखो और बार अलग-अलग तरीके से. Thank you. It's very kind of you to say so. Bad people are looking to hurt Candy, and yet she's not heading straight for the train station? I smell a payoff. I say stake her out. See where she goes. Tail this broad. Don't let her get away, but don't get spotted. I'll bring up the car behind you. पका लिया. Tail this broad. Don't let her get away, but don't get spotted. I'll bring up the car behind you. लाइक इसमें थोड़ा मुझे मेटल गियर सॉलिड की ओल्ड गेम का PTSD याद आ गया. वी आल्सो नीडेड टू डू समथिंग इन दिस फिश आफ्टर किलिंग स्नूप डॉग एंड देयर वाज नो हिंट हाउ टू डू इट एंड हाउ टू एक्सप्रेस इट. अच्छा, Like nothing or map or note or your screen, this just said mission on screen. Tail this broad. Don't let her get away, but don't get spotted. I'll bring up the car behind you.
लैक्स लूप को मारने के बाद भी गेम कुछ नहीं बताता क्या करना है, कहाँ जाना है। एक ही देता है, डू डोंट हु नोवर कैन एनीवेयर। हमें लाइक सेकंड टास्क में हाफ मैप को डिस्ट्रॉय करना होता है। समझ गया। Tail this broad. Don't let her get away, but don't get spotted. I'll bring up the car behind you. ये रंडी साली देख रही है इसकी मैया का भूसड़ा। मैम मुझे तक यार वो वीडियो देखनी पड़ी है। एंड फॉर द सोल्यूशन मेड नो सेंस, लाइक दे वांट समहाउ टू फाइंड रैंडम मींस दैट इज समवेयर रिटन एनीवेयर अराउंड दैट वी डोंट नो। एंड भाई ये बेकार लगता है मुझे ये सब। हेलो मुकेश बाबा, वेलकम टू द स्ट्रीम। मुकेश ढाका, वेलकम टू द स्ट्रीम। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम अंडरग्राउंड। I live underground. Welcome, welcome. I'm from UP, by the way. Too much slack. Gotta get closer. Excuse me. Yes sir. वैसे आप कहाँ से और भाई आपका क्या हाल है? वेलकम। Use it at specific places that destroy maps slowly, like 8 to 9 places, by the way. Also being like crime to destroy it, and there is so much secret, like walk on out, but need to. Can't risk losing the trail. Too much slack. Gotta get closer. ओके हेलो मेहदी जी, वेलकम। LANoire तू क्यों खेल रहा है बे? क्योंकि मास्टरपीस है भाई। अच्छा लगता है कोई स्ट्रीम करता है, क्योंकि अपना भी सपना था स्ट्रीमिंग करना। वैसे सपने की आवाज़ अभी भी कर सकते हो जब चाहो। बेसिकली बिकम्स अनोइंग फॉर फ्यू मिनट्स। ओके। GTA 6 के बिना रिलीज के फीड भर दी। नॉन GTA फैंस रिएक्टिंग टू GTA 6 जैसी बवासीर आ रहा है। यस सर, सही बात है। वेलकम रेक्स भाई। मैं तो मना किसने कर रखा स्ट्रीमिंग करने? वैसे मैं कह रहा हूँ कोई भी कर सकता है, वैसे थोड़ी है, मुश्किल काम नहीं है। हैप्पी रक्षाबंधन डे। हेलो भाई, आपको भी भाई, सभी को मेरी तरफ से वेलकम गोगू भाई। ओवरऑल इट इज़ द न्यू एडिशन ऑफ स्नूप। ओवरऑल द
न्यू एडिशन ऑफ स्नूप डॉग इज मेड। ओके, मैं तुम्हें उतना खास नहीं लगा भाई। लोग हिटमैन 4 बनाएंगे क्या? मैं तो 0072 का वेट कर रहा हूँ। मेरे बहुत मजा आया था 007 में। अरे इसके लिए पीसी चाहिए ब्रो मेरे पास। हाँ उस पर तो नहीं हो पाएगा अच्छे से। मैं PS5 पे कर रहा हूँ भाई वैसे स्ट्रीम। भाई PS4 5 की स्ट्रीमिंग इतनी बढ़िया नहीं होती वैसे, सच बताऊँ तो होती है, डिसेंट है, बट पीसी लेवल की फ्रीडम नहीं है इसमें। तो बस गेम खेलने मजा आता तो कर देता। वैसे भाई क्या क्या खेल रहा है आजकल सब लोग? टॉमी सेक ने बता दिया भाई वो हिटमैन में नए मिशन खेल रहा। आप लोग क्या खेल रहे? आपकी आवाज़ इतनी प्यारी कैसे, बचपन से या टीनेज याद से? भाई मेरी आवाज़ हमेशा नहीं, मेरी आवाज़ चेंज तो हुई है। मैंने अपनी पुरानी वीडियो देखी थी, अलग थी। आई मीन अगेन आई प्लेड वंस सो आई वेट फॉर टुमारो। ओके, देखने में अच्छा था बट कुछ ना कुछ मिल ही गया लोग को। एक बॉटल वाला सीन है और एक वो बैक फ्लिप डाइव। भाई मेरे को तो गन प्ले देख के अच्छा लगा भाई। मतलब मुझे लगा थोड़ा गन प्ले एटलीस्ट अलग किया। बहुत कुछ नया नहीं है गन प्ले में, बट मतलब थोड़ा टैक्टिकल फील हुआ रादर दैन वो गन ब्लेजिंग वाला नहीं लगा कि बस खड़े खड़े गन ब्लेज कर रहे हो। वो मतलब होता है कि कवर लेके भी मार रहे हो, बुलेट्स भी काउंट कर रहे हो। और वो मेरे को वो क्रॉस हेयर बहुत पसंद आया। फाइनली क्रॉस हेयर उन्होंने हटा दिया। वो RDR2 और GTA 5 का क्रॉस हेयर मुझे नहीं अच्छा लगता, तो वो डॉट रहता है बस सामने सामने। GTA और PS5 प्लस स्ट्रीमिंग। भाई मेरा PS5 मर जाएगा भाई आराम से। वैसे हिटमैन के अलावा मैं आज लास्ट गॉडेस भी खेल रहा। उस स्पीड रन करा था लस्ट गॉडेस। क्या होता है लस्ट गॉडेस में? रैज भाई वैसे आप क्या खेल रहे हैं इस वक्त आजकल? और मुकेश भाई आप क्या खेल रहे हैं? मतलब कोई पुराना गेम ही अगर खेल रहे। माँ का भोसड़ा यार, चूतिया औरत साली। वाई डोंट यू लाइक PS5 स्ट्रीमिंग? अरे भाई PS5 स्ट्रीमिंग में कमियां हैं क्योंकि मतलब ठीक है अपनी जगह, बट प्रॉब्लम्स पता है क्या PS5 स्ट्रीमिंग की? पीसी में और PS5 में। पीसी में तुम जब स्ट्रीम करते हो ना, तुम्हारा अगर मान लो गेम क्रैश कर गया तो तुम्हारी स्ट्रीम बंद नहीं होगी। इंटरनेट चला गया तो तुम्हारी स्ट्रीम बंद नहीं होगी। तुम हर गेम स्ट्रीम कर सकते हो, तुम यूट्यूब भी स्ट्रीम कर सकते हो, तुम कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी स्ट्रीम करके दिखा सकते हो। और मेन ये है कि जो गेम्स क्या बोलते हैं जहाँ मतलब जैसे कुछ गेम्स PS पे ऐसे हैं ना, PS और Xbox दोनों में, जिनमें मतलब कुछ स्पॉइलर रिलेटेड सीन्स है ना, वो स्ट्रीम नहीं हो पाते। मतलब वहाँ पे मतलब ब्लॉक्ड है वो सीन स्ट्रीम करने से। तुम्हें अगर उन्हें स्ट्रीम करना है तो कैप्चर कार्ड या पीसी के एक्सटर्नल स्ट्रीमर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो PS पे लिमिटेशन है। अब मान लो मेरा गेम अभी क्रैश हो गया, मेरा नेट अभी चल गया, मेरी स्ट्रीम तुरंत बंद हो जाएगी। पीसी पे क्या है, मेरा नेट चला गया तो भी मेरी स्ट्रीम बंद नहीं होगी, बस बफर करेगी। पीसी पे फ्रीडम है भाई, मैं स्ट्रीम करते करते 2 घंटे सो भी सकता हूँ। इसीलिए पीसी से स्ट्रीम करने वाले लोग दिन के 10-11 घंटे कर लेते हैं नॉन स्टॉप। मैं तो स्पाइडरमैन 2 खेल रहा। अरे नाइस। अपनी गेमिंग में सोच रहा क्या खेला जाए, न्यू प्लेग टेल आई वैसे, या फिर कोई सोल्स बकचोदी खेलूँ। अभी वो आई है ना मॉर्टल सेल 2, लोग कह रहे अच्छी है। मैं वो ट्राई कर सकते हैं आप। बेस्ट सेक्स सिम्युलेटर है स्टीम पर फ्री। तुम कौन से प्लेटफॉर्म पे खेलते? अच्छा यस। ये क्या खेल रहे हो आजकल? भाई ये पता नहीं क्या क्या गेम खेलता रहता है, ये ऐसे ही गेम खेलता है। बच गया। मॉर्टल सेल 1 तो बहुत टट्टी थी, डार्क सोल 2 से भी ज़्यादा घटिया। वो तो मैंने सुना, ये क्या बोलते हैं, स्टॉमी सेक ने बताया था कि मॉर्टल सेल 2 इज़ लाइक वन ऑफ द वर्स्ट गेम एवर मेड। 2 लेकिन शायद अच्छी हो। पहले कोई कज़न के पीसी में बहुत कुछ खेला हूँ, अभी उसका पीसी अवेलेबल नहीं है। पीओपी खेला है क्या किसी ने? प्रिंस ऑफ पर्शिया मैंने तो खैर नहीं खेला, बट यहाँ यहाँ सब ने आई थिंक खेला ही होगा। यहाँ आई थिंक सब ने खेला होगा। ये सब ने नहीं तो एक दो ने खेला ही होगा इधर चैट में। मैं RDR2 पेलूंगा, थंबनेल बना दिया है। भाई आप हफ्ते में 2 दिन स्ट्रीम करते हो 2-2 घंटे की। मैं बता रहा हूँ KCD 2 से लंबा चलेगा। पॉप द गोट।
Yes, my brother Rex, I told everyone the second new game came out, the Mortal is the worst souls of all time. PS5 पे गेम एंड पीसी पे स्ट्रीम कर लो। पीसी होता ना तो मैं PS5 तो मैं उसी पे करता सब। और भाई मैं वैसे भी यार अगर मेरे पास पीसी होता ना तो मैं शायद PS5 लेने की मुझे इतनी जल्दी नहीं होती। मैं वेट कर सकता हूँ GTA 6 के लिए एक साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लेता वेट। या अगर मैं जल्दी भी करता तो भी भाई मैं कैप्चर कार्ड भी लेता। कैप्चर कार्ड मैं अभी भी ले सकता यार, लेकिन मेरा मन नहीं करता लेने का। मेरे को लगता है फालतू में पैसे लगेंगे कैप्चर कार्ड लेने में, और मेरा वैसे भी स्ट्रीमिंग हो ही जाती है मेरी जिद जैसे मुझे करनी है एटलीस्ट। मैंने खेला है बहुत, लेकिन आपने पूरा नहीं किया ना, तो मैं कह रहा हूँ टाइम लगेगा आपको। माँ की चूत गोबी सॉफ्ट की कैंसर, हाँ भाई चूतिया है गोबर सॉफ्ट। पॉप वॉस नेक्स्ट लेवल ऑफ देयर टाइम। मैंने प्रिंस ऑफ पर्शिया 2D वाला खेला है शायद 1986 समथिंग। प्रिंस ऑफ पर्शिया सॉलिड गेम है। मॉर्टल शेल 1 का कॉम्बैट इज वर्स देन फ्री फायर, नॉट गोना लेट्स नॉट इवन एंजॉयबल। भाई वो तो सारे सोर्स गेम का सच बोल दिया, सॉरी। वो सारी सोल गेम का बेकार लगता है। ब्लैक फ्लैग फिर से चेप कर पैसा ले गया। नहीं ये नहीं कि MC1 रीमेक मार देता भाई। ब्लैक फ्लैग तो आप ये लोग भाई अगर रीमेक अगर इनका ये चला ही है ना तो मैं कहूँगा भाई AC1 और एसजीओ ट्रायलॉजी भी रीमेक कर ही दो इसी बात पे। को मतलब नहीं उन्हें उन्हें भी पुराने रखने का। एसजीओ ट्रायलॉजी तो फिर भी ठीक है, लेकिन AC1 को तो रीमेक चाहिए। उस गेम को रीमेक वैसा चाहिए जैसा कि एक एकदम खत्म आदमी को खाना चाहिए रहता है, भूखे आदमी को, उसी तरह उसको एक रीमेक चाहिए। यार वैसे यहाँ किसी ने ये वाला गेम खेला है LANoire, मैं जो खेल रहा हूँ अभी? Bookmakers? Yes. Surprise, surprise. वैसे कुछ कर सकते हैं क्या PS5 में गेम एंड पीसी स्ट्रीम सब कुछ भी कर सकते हैं क्या? कैप्चर कार्ड लगेगा, कैप्चर कार्ड एक लैपटॉप अच्छा सा, और माइक वगैरह भी लेना पड़ेगा, मतलब थोड़ा एक्सटर्नल खर्चा तो आएगा ही। करने को मैं कर सकता हूँ बट मन नहीं करता। एचजीओ ट्रायलूज से एक बार चल जाएगी बट मे बी AC2 को कर दें। हाँ भाई AC2 का वो जो है ना क्या बोलते हैं क्लाइंबिंग वाला पार्कोर बहुत बहुत बेकार लगता है मुझे। वो बार बार दीवार से चिपक के खुद को पीछे फेंक देता है। Ubisoft has turned up gamers against them literally, especially after making the game playable on Ubisoft instead of Steam in PC, and that bot even that bad because major studios do it. PC वाले mainly. Like Rockstar, EA, Epic and even CDPR. गोकू तुम्हें ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, कैप्चर कार्ड लगता है अच्छी क्वालिटी का ले लेना। क्या PS3 बाय कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है रुपीज। या PS3 मेरे को लगता नहीं मिलता होगा कहीं, और PS3 आउटडेटेड हो चुका है भाई। अभी तो PS4 भी आउटडेट हो रहा है भाई। अभी पता है आपकी बेस्ट बेट क्या है? एक अच्छा पीसी। अगर वो नहीं है तो भाई एक लो एंड, अगर आपका लो एंड भी है ना, क्लाउड गेमिंग ही आपके लिए बेस्ट बेट है इस वक्त। क्लाउड गेमिंग आपको बचा सकती सिर्फ। इसका तो GTA 3 जैसे ग्राफिक्स का वर्ल्ड लग रहा है भाई। GTA 3 से कहाँ कंपेयर कर रहे हो, उससे बेटर है इसकी ग्राफिक्स। 2011 का गेम है बट भाई। Ubisoft कनेक्ट मेड द वर्स्ट लॉन्चर ऑफ ऑल टाइम, प्ले ऑन मोबाइल। गेमिंग इतना घटिया हो गया, बेस्ट अनाउंसमेंट इवेंट इज रिमास्टर ऑफ विचर 3 भाई। ये बार भाई बहुत डीप शब्द कह दिया आपने। इतना घटिया था ना गेम्स फॉर्म में, बोर हो गया था भाई देख के। मैं नींद आने वाली थी मुझे भाई, लिटरली आंखें ऑलमोस्ट बंद हो रही थी भाई। वो तो बस जैसे ही फाइनल फैंटेसी अनाउंस हुआ ना, मेरे को पता चल गया अगला विचर ही आएगा। उन लोगों ने टाइटल में फाइनल फैंटेसी और विचर लिखा था, उन्हें पता था कि बस ये 2-3 ही ढंग के गेम आएंगे पूरे उसमें। बाकी था नहीं क्या कूड़ा का बड़ा अनाउंस किए जा रहे हैं बस। विचर का एक प्ले थ्रू और कर सकते हैं भाई, अब ऑफलाइन करूंगा अगर मुझे करना हुआ तो। PS5 पे गेमिंग एंड PC पे स्ट्रीमिंग बहुत ताम झाम है उसमें। PS5 लेना भाई, PS5 लेकिन महंगा होता है यार। और भाई PS5 महंगा इसलिए कह रहा हूँ ना, वे तो गेम के पैसे कहाँ से लाओगे, मेन ये है। PC एक बार को ना पायरेसी बचा लेगी तुम्हें, लेकिन PS5 लेने का तुम्हें बार बार घर वालों से पैसे मांगने पड़ते हैं।
अरे बेटर या बेकार नहीं, वाइब बेस्ट। GTA 6 खेलना है तो PS5 ले लो, पैसा बुमरा दे देगा भाई। या मैं अपने मन के गेम्स नहीं खेल पा रहा हूँ बिना सेल के। अरे अभी 12th पास किए स्टूडेंट हूँ, PS5 कैसे? वैसे मैं कह रहा अभी 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 PS5 नहीं हो पाएगा। अभी तो मैं कहूँगा तुम्हारी बेस्ट बेट यही है ना, अगर तुम्हारा क्लाउड गेमिंग हो सकती है तो उससे काम चला लो। क्लाउड गेमिंग अभी तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट बेट है। इवेंट वॉज बोरिंग बट अब GTA 6 का इवेंट, GTA 6 का गेम प्ले इवेंट में कोई और थोड़ी आया था, वो तो GTA 6 का GTA 6 वाली था। वुल्वरीन से उम्मीद थी बट साला मुझे उसका कॉम्बैट अच्छा लगा, बट मुझे उसकी लेंथ अच्छी नहीं लगी भाई। भाई पता है क्या, 11 घंटे का गेम है वो, बस 11 घंटे का गेम प्ले, 4 घंटे का कट सीन, बस उसके लिए मैं 5,000 मांग रहा है। कॉम्बैट भी कोई, अब बहुत लोग बोलते हैं GTA जेनेरिक है, GTA जेनेरिक है, लेकिन साले भूल जाते हैं यार वो सेम चीज़ तो सुपर हीरो गेम्स की भी है भाई। वुल्वरीन का गेम प्ले भी जेनेरिक सुपर हीरो गेम है। सोल्स गेम का कॉम्बैट भी जेनेरिक ही तो रहता है भाई। एक मोटा बॉस है, उसको रोल डॉज, स्लो अटैक, हैवी अटैक, बाहर गेम जेनेरिक ही तो है। लोग पता नहीं वुल्वरीन में है भाई। मेरे को 5,000 लाइक गेम नहीं है वो। एटलीस्ट स्पाइडरमैन ओपन वर्ल्ड था भाई, तो मुझे लगा कि ठीक है 5,000 दे सकता हूँ, ये तो नहीं। Like I suspended my account just cause I did not logged in it like 3-4 months and I had Ghost Recon and Immortal Phoenix in it। ये कौन सी गेम है? दूसरी नाम नहीं सुना मैंने इसका। आप तो फेस कैम भी नहीं करते, तो आपने कभी बिना कपड़ों के स्ट्रीम की है? नहीं, बिना कपड़ों के नहीं की मैंने भाई। इतने बुरे दिन नहीं आए कब बिना कपड़ों के करूं भाई। बिना कपड़ों के मैं इसलिए नहीं करता ना, मेरे कमरे में लोग आते जाते रहते हैं। मान लो किसी ने नंगा अचानक से देख लिया और बोल दिया, तुम्हें पता चल जाएगा। एक भाई एक्सबॉक्स इज नॉट, हाँ एक्सबॉक्स एक्चुअल में बेस्ट है, मैं एग्री करूंगा भाई। एक्सबॉक्स अभी के टाइम ना बेस्ट कंसोल है, मैं इनफैक्ट ये भी कहूंगा। जितना एक्सबॉक्स इज केयरिंग मोर फॉर फैंस देन प्ले स्टेशन। रिप्लेबिलिटी रिप्लेबिलिटी होती है एटलीस्ट 11 घंटे की गेम में तो चलेगा। इवन रिक्वायर्ड मैं 4 बार खेली विद द चैलेंज बट फॉर इनफाइनाइट टाइम। बट वही मैं कह रहा हूँ, वुल्वरीन की प्रॉब्लम ये है ना कि वो गेम में रिप्लेबिलिटी उतनी नहीं दिख रही है मुझे भी। रिप्लेबिलिटी देखो वैसे मैं कंसिडर नहीं करता गेम्स में, लेकिन अगर कोई गेम बहुत छोटी है ना 10-15 घंटे की, तो वहाँ पे रिप्लेबिलिटी मैटर करती है। RE9 में है भाई, मैं 2 बार खेल चुका वो गेम। उस गेम को तुम वो भी कर सकते, हार्डेस्ट डिफिकल्टी भी कर सकते हो उसको, तुम चैलेंज रन भी कर सकते हो, ट्रॉफी हंटिंग भी फन है उसकी, इनफाइनाइट टाइम भी कर सकते हो, और या उसके बिना भी कर सकते हो, उसमें है। लेकिन वुल्वरीन का ये है ना कि उसका वो दिख रहा है बस वही कॉम्बैट मार रहा है, क्या रिप्लेबिलिटी नहीं है उसमें। कुछ तो लोग कहेंगे लोग की मांगी क्यों, सही बात है रिट्टी भाई, सल्यूट रहेगा। वेलकम आरटी भाई। आई वांट कि GTA 6 का गेम प्ले एटलीस्ट 24 आवर का हो। यार गौरव भाई, मुझे लगता है ना आपने कभी GTA खेला ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि GTA 6 का गेम प्ले 24 घंटे का नहीं होगा तो आप, मुझे तो पूरा यकीन आपने एक GTA नहीं खेला है भाई। हर GTA बड़ा होता है भाई। आई थिंक सबसे छोटा बस वो GTA 3 ही था। GTA 4 भी बड़ा गेम है, GTA सैन एंड्रियास भी बड़ा गेम है, वाइस सिटी भी आराम से 25 घंटे तो ले ही लेता है अच्छे से अगर खेलो तो। वो HD यूनिवर्स के गेम्स बड़े ही हैं भाई। GTA 5 तो 30-35 घंटे का गेम है, अगर सब कुछ करोगे तो और ज़्यादा लग सकता है टाइम। भाई आपको कैसे लग रहा है GTA 6 24 भाई? 7,000 का वो लोग गेम बेच रहे हैं। उन लोगों में अक्ल है भाई, वो लोग यूबीसॉफ्ट या वो चूतिया कंपनी थोड़ी है कि लेंथ कम रखेंगे। भाई आपने कभी PS और जेल ब्रेक करने का नहीं सोचा? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं फेस कैम मैं कभी नहीं लाऊंगा, आई एम हैप्पी विदाउट फेस कैम। भाई रुको, इसके कमरे का कैमरा चेक करता, कपड़ा पहन के आया ही नहीं। हाँ भाई हैकर, र्यूमर्स आ रहे हैं GTA 6 80 आवर की स्टोरी। 80 आवर का सिर्फ स्टोरी है भाई, साइड कंटेंट उसमें कितना है वो देखो भाई। भाई मैं जैसे मैंने KCD और विचर गेम्स खेले हैं ना, मैं उसी तरह निकालूंगा इसको भी, GTA 6 को भी, सब कुछ करूंगा। आर्यन में मूड निकल गया ग्रेस के आर्ट में, वो था हार्ड। हम सिर्फ कच्छा बनियान टी शर्ट और पजामा पहनते हैं भाई। GTA वाई सिटी और सैन एंड्रियास, यार टफ क्वेश्चन है मेरे लिए। मैं कहूँगा यार, आई विल से मेरे लिए यार, अगर मैंने सैन एंड्रियास आज के टाइम खेला होता ना तो शायद मुझे वो ज़्यादा पसंद आता। सैन एंड्रियास थोड़ा डिफिकल्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आई वुड से वाई सिटी मुझे थोड़ा ज़्यादा ईजी लगा, क्योंकि KCD इज ग्रेटर है GTA 6
मेरे लिए तो ये आई थिंक अभी तक के लिए तो मेरे लिए केसीडी टॉप टियर गेम है। GTA 6 टेक ओवर कर सकता है उसे भाई। GTA 6 भी इमर्सिव रियलिटी पे जा रहा है, क्योंकि देख रहा हूँ मैं भाई कैसे वो कॉप्स तुम्हें याद रखेंगे, एनपीसीज की लाइफस्टाइल होने वाली है, वो गेम जा सकता है। GTA 5 4 सैन एंड्रियास 30 आवर लग जाते हैं, 4 की 2 DLC भी 40-50 आवर भाई। तो मैं कह रहा हूँ जो GTA पूरा छोटे गेम्स नहीं है वो भाई। ये अब 80 आवर स्टोरी एब्सोल्यूट सिनेमा। यस GTA 4 और 5 4 भाई आराम से 80 आवर्स एंड 80। हाँ क्रिम्सन इज ग्रेटर देन GTA 6 भाई। क्रिम्सन घूमने के लिए ठीक है, GTA 6 है, GTA 6 है। सैन एंड्रियास इज बेटर गेम। जिम करो, वेट सिस्टम, खाना खाओ एक्सेट्रा, चीट कोड, जेट पैक, गोटेड मैप, मिशन कैरेक्टर। हाँ सैन एंड्रियास अभी अपने टाइम के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा आगे का गेम है, ये तो मैं मानूंगा। वाइस सिटी और सैन एंड्रियास दोनों ही सही है यार, मुश्किल है पिक करना मेरे लिए। लेकिन वाइस सिटी थोड़ा मेरे को क्या है, मैंने रिसेंटली खेला है ना, तो मुझे थोड़ा वो लगा, इसलिए मेरा आंसर वो निकल रहा है। हो सकता है कि एक्चुअल में मैं अभी फिर से अगर सैन एंड्रियास ट्राई करूँ तो मेरा चेंज हो जाए ओपिनियन। बट हाँ GTA 4 को लेकर मेरा ओपिनियन नहीं कभी चेंज होगा, वो मेरे लिए टॉप गेम रहेगा हमेशा। मुंबई गली ग्रेटर दैन GTA 6। हाँ भाई भरोसा रख। मुंबई गली से याद है वो निखिल ने साला रिएक्ट किया है भाई, निखिल मलांकर ने, उन्होंने भी रिएक्ट किया है इस पे, GTA 6 पे। GTA 4 और 5 4 भाई 4। सैन एंड्रियास वॉज OG, इट वॉज पार्ट विच इज बेटर देन क्रिम्सन, फ्री फायर एंड GTA 3 कंबाइंड। यस सर। वाइस सिटी इज मोर OG। तो वाइस सिटी दोनों ही बढ़िया है यार, दोनों ही गेम सही हैं, दोनों की अपनी वाइब है। लेकिन वाइस सिटी है कि उसकी लेंथ मतलब थोड़ी, वाइस सिटी इज मोर अबाउट बिल्डिंग एम्पायर। इंडस एंड फौजी इज ग्रेटर। यस इंडस एंड फौजी तो बेस्ट है। बाकी प्रोजेक्ट मद्रास तो सबको टॉप करता है। GTA 4 और RDR1। GTA 4 RDR1 भी बहुत प्यारा गेम है। RDR1 GTA 4 और RDR2 ये तीनों बेस्ट रॉकस्टार गेम्स है मेरे हिसाब से। अगर मैं मतलब स्टोरी टेलिंग की बात करूँ तो मेरे हिसाब से मतलब ये गेम्स ऐसे कि ये स्टोरी इनको कैरी करती है इन गेम्स को। वाइस सैन एंड्रियास की भी बहुत अच्छी स्टोरी है, बट सैन एंड्रियास का ये भी है ना कि बहुत से गेमर्स हैं जिन्होंने सैन एंड्रियास ना उसका ओपन वर्ल्ड के लिए खेला है, उसका क्योंकि सैन एंड्रियास का ओपन वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट ओपन वर्ल्ड है 2004 के हिसाब से, जो रेक्स बाय ने लिखा अभी, वेट मैनेजमेंट वो सब। लेकिन ये जो 3 गेम है ना, ये 3 अपने स्टोरी पे ही कैरी होते हैं पूरे। RDR2 और विचर 3। हेलो मिस्टर पैरासाइड, हेलो भाई क्या हाल है भाई। फ्री फायर इज बेस्ट ई स्पोर्ट मोबाइल गेम प्रो। ये अब मेरी फेवरेट GTA 4 है एब्सोल्यूट सिनेमा। मेरी भी DLC बस कभी नहीं खेल पाया यार मैं, सैडली। करूँगा किसी दिन DLC भी, PC आने के बाद ही खेल पाऊंगा, बट सैडली। Isn't that the... A blonde woman just came in here. She went out the back way. Said she was being watched. How much did she collect? $3,600. She cleaned me out. On the Hammond Kid Galahad fight? You got it. I'm not complaining. We all made a lot of money on that one. Huge plunge on Galahad, and then Hammond knocks the... विचर 3 और KCD 1 भाई ये थोड़ा टफ है भाई, और आई लाइक KCD 1, बट KCD 1 थोड़ा सा जैंकी गेम भी है यार, वो एक प्रॉब्लम है। बट आई वुड स्टिल से KCD 1। चलो भाई KCD 1 ही लूंगा मैं। विचर मुझे बहुत बढ़िया लगा, नो डाउट विचर बहुत प्यारा गेम है, बट किंगडम कम का वर्ल्ड मैं नहीं भूल सकता भाई। किंगडम कम की जर्नी और वर्ल्ड, वो ग्राउंडेड और रियलिस्टिक जर्नी मैं नहीं भूल सकता अपनी। आई वुड से KCD 1। RIP। Now we are going back from where it all began. We are going to back to Vice City GTA 6. Now we can say भाई Vice City का लाइन नहीं है वो तो सैन एंड्रियास की लाइन है। बेस्ट GTA गेम है GTA 6 like bro, what are you guys talking about? Cyberpunk और RDR2। Oh dentes fortuna juat, oh dentes fortuna juat। bum out. So she collected the money and went out through the back door? Nope. She made a phone call over there, wrote something on a notepad, and then left. एंड भाई मैं एक चीज़ और कहूँ, KCD 1 के DLCs बाय फार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। KCD 1 के DLCs सारे DLC अच्छे हैं भाई उसके। बैंड ऑफ बास्टर्ड्स, फ्रॉम द एशेस, योहांका ट्रायल, थेरेसा का मोवेन स्लॉट,
वो केसरी 1 के डीएलसी मुझे लगता है अभी तक के मेरा बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस रहा है, अदर दैन विचर 3, हार्ट्स ऑफ स्टोन एंड ब्लड एंड वाइन। साइबरपंक और GTA 4 हार्डकोर अपडेट, यस दो। हाँ मालूम है ये सैन एंड्रियास का, बट अभी के हिसाब से हाँ ये कह सकते हैं। What are you doing? An old intelligence trick from the Marines. भाई तो बचपन में करता था मैं। We know where she's headed. Let's get moving. भाई गेम्स वर्ल्ड का फिक्शन बना रहा वर्कशॉप, ऐसी डीएलसी और पार्टवेज आएगा। शिट के वही क्यों गेम साइबरपंक और GTA 4 भाई GTA 4 फ्यूचर में भी आई डोंट नो, आई माइट हैव डिलीटेड पार्टवेज फाइल लाइक देव फाइल्स, लाइक गेम इंजन से ही सीधा गेम उड़ाई है मैंने शायद। What is Pathways even about? K11 King, further to your request, Bunko Fraud has 3 known bookmakers operating out of storefronts in the Hollywood area. Thrifty Liquor, 6106 Santa Monica, the Examiner Drugstore, and a Max Spirits at 1658 North Cherokee. KGPL clear. साइबरपंक टॉप 7 फेव गेम नहीं है यार। मैं पता है रैंकिंग ऐसे करता नहीं हूँ, सच बताऊँ तो मुझे सारी गेम सही लगती, मतलब ऐसे मेरे को कहोगे कि रैंक वैंक करो प्रॉपर, तो वो तो मैं नहीं करता, चेंज होती रहती है टाइम के साथ। साइबरपंक मैं कहूँगा मतलब मेरी जो मतलब आरपीजी गेम्स या ओपन वर्ल्ड गेम्स है ना, उनमें मतलब थोड़ा लीस्ट आती है नीचे। उसका रीज़न है कि देखो केसीडी और विचर का वर्ल्ड मुझे साइबरपंक से ज़्यादा पसंद है भाई ओवरऑल, मतलब ज़्यादा स्टोरी मुझे उनकी साइबरपंक से ज़्यादा पसंद है उन दोनों गेम्स की। और बाकी और GTA मतलब GTA 4 ही भाई, अगर GTA 5 से साइबरपंक कंपेयर करोगे ना तो मैं साइबरपंक ही पिक करूंगा GTA 5 के कंपैरिजन में। बट बाकी 4 तो मुझे बेटर ही लगता है बिकॉज मुझे उसकी स्टोरी ज़्यादा पसंद है। मेरा थोड़ा है कि मैं गेम्स को स्टोरी के बेसिस पे जज ज़्यादा करता हूँ कंपेयर टू दैट। और वो भी है कि साइबरपंक क्या है ना, भले ही एक आरपीजी गेम है बट वो आरपीजी से ज़्यादा एक एक्शन एडवेंचर फील होता है, मतलब उसमें उतनी डेप्थ नहीं है वो आरपीजी वाली उसमें उस लेवल पे जितनी केसीडी एंड विचर वगैरह में है, अगर मैं आरपीजी मैकेनिक्स की बात करूँ तो। चलो 10 मिनट में आर्डिया 2 भी इंस्टॉल हो जाएगा, अदरवाइज जिस दिन GTA 6 पीसी पाएगा मैं परचेज करूँगा, फिर उसका सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पीसी पहले अपग्रेड कर लेना भाई जी, रिक्वायरमेंट आ जाएगी। भाई टॉप वेब सीरीज बताना जरा। मेरे को तो सारी अच्छी लगती हैं, मेन तो है ब्रेकिंग बैड भाई, ब्रेकिंग बैड को तो कोई टॉप नहीं कर सकता भाई। एक्ट्स लाइक द ग्रेटेस्ट शो ऑफ ऑल टाइम, इट्स द ग्रेटेस्ट शो ऑफ ऑल टाइम। बाकी सारी मैंने जितनी भी देखी मुझे, मैं पता है वेब सीरीज के मामले में थोड़ा चूजी वो मतलब गेम्स में मैं बता सकता हूँ, सीरीज में थोड़ा मैं वो टॉप 5 टॉप 3 कर नहीं पाता क्योंकि सीरीज का जॉनरा वैसा होता है ना। गेम्स में क्या है कि कुछ पर्टिकुलर जॉनरा मैं एंजॉय ज़्यादा करता हूँ, लेकिन सीरीज में हर जॉनरा इंटरेस्टिंग है मेरे को। अब जैसे कॉम्प्लेक्स जॉनरा देखना है तो मेरे डार्क मुझे पसंद है, टाइम ट्रैवल में टाइम ट्रैवल एंड वो फैमिली ट्री वाली जो बकचोदी है उसमें। बाकी भाई वो विजिलेंटे हैकर और साइकोलॉजिकल ड्रामा जो है वो उसमें मुझे मिस्टर रोबोट पसंद है। उसका साइकोलॉजिकल ग्राउंडेड क्राइम ड्रामा में सोप्रानोस काफ़ी सही सीरीज लगती। उसका फास्ट पेस थ्रिलिंग में मुझे प्रिजन ब्रेक पसंद है। तो वैसे ही यार बाकी फैंटेसी में गेम ऑफ थ्रोन्स मेरी फेवरेट सीरीज है, तो मेरा को वो उतना चूज नहीं हुआ। और सर्वाइवल में वॉकिंग डेड भाई, वॉकिंग डेड मैंने 40 दिन में खत्म की थी, 170 एपिसोड। स्टोरी के नाम पे लास्ट ऑफ अस 2 टॉप मास्टरपीस। अरे भाई लास्ट ऑफ अस को तो मैंने रोस्ट कर दिया भाई सीडीपीआर की वजह से, सीडीपीआर का देख के। बीसी गेम टॉप रैंक नहीं कर सकता साला, वेब सीरीज ये ब्रेकिंग बैड ही देखेगा भाई। ब्रेकिंग बैड ऑब्जेक्टिवली सबसे बेस्ट सीरीज है भाई, वो सीरीज की उसकी जैसी एंडिंग आज तक मैंने नहीं देखी। बस उसके लेवल पे जो एंडिंग मैंने देखी है ना सिर्फ एक थी, वो मिस्टर रोबोट की एंडिंग थी।
बाकी जितनी मैंने सीरीज देखी उन सब की एंडिंग्स किसी की अच्छी है, किसी की ठीक लगी, बट ब्रेकिंग बैड और मिस्टर रोबोट इन दोनों की एंडिंग टॉप टियर है भाई, मतलब अनमैच्ड है इन दोनों की एंडिंग अभी तक जितनी सीरीज मैंने देखी उसमें। ब्रो वाज आउट टू से वेब सीरीज में थोड़ा 14 हूँ, यस आई मीन कुटनबर्ग रीजन में लाइक एक सिगिस्मंड डिजर्टर को मारना, बॉक्सिंग मैचेस कर दिया, थंडरस्टॉर्म वाली क्वेस्ट भी, अरे वो मैंने भी की है वो वाली। आई रिमेंबर दैट डे व्हेन जोएल मरा था, वो बहुत रोया था मैं। ब्रेकिंग बैड इज गुड भाई, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है भाई। मैं सबको बोलता हूँ अगर तुम्हें टीवी शो कोई भी देखना है ना, एक बार ब्रेकिंग बैड देख लो। ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल तो देख ही लो। मैंने तो ऑलमोस्ट सबको सजेस्ट मार के रखा है कि वो तो मतलब, और वो ये भी है ना कि सब लोगों के टाइप का शो है वो, वैसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही लोगों को समझ आएगा। अब जो है डार्क है ना, वो सबके टाइप का शो नहीं है वो, डार्क या मिस्टर रोबोट जैसे, या सोप्रानोज है वो भी स्लो बर्न बहुत है, तो कई लोगों को नहीं उसकी पेसिंग जचती। ब्रेकिंग बैड की पेसिंग सबके लिए सही है। सही मायने योर हाइजनबर्ग, बेस्ट स्टोरी एवर रिटन इन अ गेम इज वुल्फ अमंग अस। मैं खेला नहीं। ग्रंट के ब्लैकस्मिथ के साथ ब्लैकस्मिथिंग कंपटीशन करी, सक्टॉल के हंट्समैन की क्वेस्ट करी। ओह नाइस नाइस, मैंने भी करा है सब तो यार, मैंने तो सभी करा था, मूवीज़ और वेब सीरीज़ यार दोनों ही अच्छी है अपनी जगह। ऑल द वेब सीरीज में कैरेक्टर डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहता है, तो वेब सीरीज हैज़ डेफिनेटली मच बेटर रिटन कैरेक्टर्स और स्टोरी। बट मूवीज़ शॉर्ट टर्म में ज़्यादा इंजॉयबल है, मतलब तुम्हें वेब सीरीज में क्या है तो एक जर्नी रहती है, वो पूरी लॉन्ग टर्म जर्नी की तरह होती है वेब सीरीज। वेब सीरीज इज लाइक वॉचिंग टेस्ट एंड वनडे, एंड मूवीज आर लाइक वॉचिंग T20, ऐसे कह सकता मैं। ब्रेकिंग बैड लड़कियों के टाइप का नहीं शायद, मुझे को पसंद नहीं आया भाई, बहुत मैनली शो है ना, फीमेल टाइप का शो नहीं है वो, बहुत मैनली शो है। मैथ्यू को मार दिया एंड बुक दे दी, नाइस भाई। ये वेब सीरीज बेटर देन मूवी एनी डेज, मुझे भी मूवीज भी सही है यार, मतलब जॉन विक जैसे मैंने देख रखी है वो एक्शन में, जेम्स बॉन्ड देख रखी है मैंने, वो सब बढ़िया लगती। बाकी हैरी पॉटर मूवीज भी देख रखी है। मूवीज को कभी मैं वो नहीं कहूँगा कि अच्छी नहीं होती, क्योंकि मूवीज के बाद वेब सीरीज है, मूवीज इंस्पिरेशन भी है बहुत सारी वेब सीरीज की, जैसे भाई ये सोप्रानो जैसे शो गॉडफादर और गुड फेलास से इंस्पायर हुए हैं। ये जीटे जैसे गेम्स जो है वो स्कारफेस और हीट जैसी मूवीज से ज़्यादा इंस्पिरेशन ली उन्होंने, तो मतलब मूवीज का इन्फ्लुएंस बहुत रहा है भाई, क्या बोलते हैं गेमिंग और सीरीज वगैरह में। बेलिफ को बेस्ट हॉर्स सैडल ले ली, मैथ्यू को दिया बुक दे दी, बेलिफ को बेस्ट हॉर्स सैडल ले ली, अरे नाइस। चलो RDR2 इंस्टॉल्ड, अब एक बार चला के देखो, मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स भी अच्छा लगा, मज़ा आ रहा है एक्सप्लोरेशन में, बट ऐसे ही फैंटेसी टाइप के पसंद है काफ़ी, जैसे ओवर भाई फैंटेसी गेम पसंद है तो विचर 3 कब लाओगे? चोरी करके फ्रॉम गन्स ग्रैंड्स ट्रेडर, अरे भाई चोरी की है सैडल की। हाँ अभी भी आप बोल रहे हैं ना, देख सकता है ब्रेकिंग बैड, सब देख सकते हैं ब्रेकिंग बैड। हाँ मतलब समझ कॉम्प्लेक्स नहीं है ना वैसा कोई कि तुम्हें समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि ज़्यादातर शोज ऐसे होते हैं ना। अब मिस्टर रोबोट बहुत प्यारा शो है, लेकिन बहुत लोगों को समझने में दिक्कत आएगी उसे, मुझे भी थोड़ी आई थी। कुछ कुछ मूवीज़ अच्छी होती है लेकिन फिर वेब सीरीज में जर्नी तगड़ी है। हाँ हैवी रेन, वुल्फ अमंग अस एंड डोकी डोकी आर ग्रेटेस्ट स्टोरीज एवर रिटन इन माय ओपिनियन। ओके विचर 3 भी लूंगा सेल पे, विचर 3 तो भाई ले लेना। अराउंड 20 के ग्रोशन हो गया आज मेरे पास, सही है भाई, कमा रहे हो, अच्छा कमा रहे। Hammond backed himself to win. And Candy is picking up the winnings. Smart play. Question is Candy collecting on Albert's behalf, or is she cheating him too? भाई पता है मुझे पॉज पसंद है गेम्स में भाई, सोल्स गेम में बस ना मुझे थोड़ा यही लगता है ना कि अगर पॉज दे देते तो अच्छा रहता। मतलब मैं समझ रहा हूँ लोग डिफिकल्टी बढ़ाना चाहते हैं अपने गेम्स की, लेकिन सेकीरो में तो पॉज है ना, वैसे ही पॉज देना चाहिए गेम्स में। देखो चैट पढ़ने में आसानी होती है मुझे भाई, चैट पढ़ने में भी आसानी होती है, मेरा गेम की स्टोरी भी मिस नहीं होती। अब मैं गेम खेलते खेलते भाई एकदम चैट पढ़ूंगा, मेरी स्टोरी मिस हो जाएगी। अब मैंने अच्छे से सारी चैट्स पढ़ी, अब मैं वापस गेम पे आ गया। Detectives Phelps and Earl, LAPD. Relax, Cole. You just have a blonde in Nice here. by Radzik ka fraud rewards. I'm just about to close up. She took me to the cleaners.
4,000 clams and change. How long ago did she leave? Maybe 5 minutes. Called the cab. Asked for a number. I told her there was a card over there by the phone. First try me level 4. Bye. A skeleton goes into a bar and orders a beer and a mop. Yellow cab. We need to get after her, fast. और तो एक प्रॉब्लम हो गई क्या? Operator, message for KGPL. क्या दिक्कत आई? Putting you through now. Can you connect me to the Yellow Cab Company, Hollywood 2187, please? This is Detective Phelps, LAPD. You dispatched a cab to 1487 Ivar Avenue, Hollywood? Yes, sir. Send one round from the pool. Do you have the number of that cab? Number 179. Thanks. विचर 3 2015 में आता है. यस यस. गेम की सेव फाइल करने से पहले क्लाउड का टाइम खत्म हो गया, सो आई डोंट नो कहां से शुरू होगा. अरे जहां पर आपका ऑटो सेव हुआ था लास्ट Mervyn to वहीं give से. us an address on Ray's place. जहाँ चिंता मत करो भाई, गेम में से ऑटो सेव होता रहता है बीच बीच में. You have any idea who Ray is? Sugar Ray? Not now, Mervyn. Cole doesn't have much of a sense of humor at the best of times. Ray runs a shop up on North Cherokee Avenue, just south of Hollywood Boulevard. If everything goes right, I won't lose much progress and would start with Thunderstone. अरे नहीं, क्वेस्ट कंप्लीट होने आप मतलब आपका ऑटो सेव जहाँ पे हुआ था वहाँ से हो जाएगा, तो वो दिक्कत नहीं. हार्डकोर मोड में ऑटो सेव का कोई रूल चेंज तो नहीं है ना? Every bookmaker in town. Hammond needed to make sure he was getting a bigger payday than if he'd taken the flop. Never trust the limeys, especially where a fight's concerned. A mistake we can't seem to stop making. Any Central Unit of 484 just occurred, 3155 West 4th Street. Unit to handle code 3 identified. Straight on. Straight over. Straight through the next intersection. Auto saves होता है, but if you don't close game properly, sometimes game doesn't save data on cloud, which generally does not affect much because you could still use the data saved on local. Okay, समझ गया. कोई नहीं, ठीक रहेगा, कुछ इतना दिक्कत नहीं. इतना वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, नो वरीज. बाकी खेल भी बढ़िया रहे भाई, हार्डकोर वगैरह था भाई. हार्डकोर पे आपने अच्छा गेम प्रोग्रेस भी किया है. आई कांट इवन इमेजिन प्लेइंग ऑन हार्डकोर. बस आपको मैप लोकेशन सब याद रहती है. मैं तो सर घूम जाए अगर मैं हार्डकोर पे खेलने गया. चलो एंजॉय, मैं चलता डिनर को. ओके भाई, थैंक यू रेक्स भाई फॉर ज्वाइनिंग. एंजॉय द डिनर. But since I am playing on cloud, if the progress doesn't save properly, you lose progress. Okay, yeah. Thank God we're not in my car. का plan है. Go straight at the next intersection. Straight ahead.
Straight through the next intersection. Straight on. Stay straight on this road. Straight over the next intersection. Make a right turn. Keep straight. Straight through the intersection. Stay straight on this road. Take the next left. Straight on. You need to take the next right. Take the next left turn. It's the next left. Go straight through. एंड इट एक्चुअली हैपेंड विथ मी. मैंने थर्सडे रात को जल्दी जल्दी बंद कर दिया था एंड आई लॉस्ट अराउंड 4 hours ऑफ प्रोग्रेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेमी इंक्वेस्ट टू कंप्लीशन टू द स्टार्टिंग ऑफ फिंगर ऑफ गॉड. और Go right just now. भाई सही बताऊँ क्लाउड गेमिंग Take the है तो next बड़ी right. सही चीज़, हेल्पफुल है. बट आई थिंक फॉर अ गेमर लाइक मी, मैं कभी क्लाउड गेमिंग नहीं कर पाऊंगा अच्छे से. मतलब मैं कंफर्ट में आ चुका हूँ अच्छे से गेम चलाने के. मैं तो क्लाउड गेमिंग इमेजिन ही नहीं कर सकता. फॉरगेट स्ट्रीमिंग, ऑफलाइन भी बड़ी वो है, दिक्कत होगी. अच्छा वैसे आपका पीसी विचर 3 तो चला लेता है ना अच्छे से? Make a right here. बट सॉन्ग ज़्यादा फास्ट चला पाएगा कि नहीं ये देखने की बात है. शायद मुश्किल हो, क्योंकि भाई PS4 पे तो नहीं चलेगा वो सॉन्ग ज़्यादा फास्ट. विचर 3 चला लेता है, नॉट द रीमास्टर. हाँ मतलब वही सॉन्ग्स ऑफ द पास्ट वगैरह नहीं चल पाएगा ऐसा. बट शायद क्लाउड के थ्रू आपके में भी वही, आप क्लाउड के थ्रू करोगे वो भी फिर अगर आपको खेलना है. जब Take the next left turn. क्लाउड के थ्रू आप खेल सकते हो और क्या बोलते हैं आपका प्रोग्रेस क्लाउड में ट्रांसफर करनी पड़ेगी आपको. Left here. Straight on. Straight through the intersection. Turn right here. यस क्लाउड के थ्रू खेलूंगा. हाँ अच्छा, आप क्लाउड के थ्रू जैसे आप DLC खिलाते हो, आपका ये प्लान है कि आप क्लाउड के थ्रू रिमास्टर भी एक प्ले थ्रू करोगे? जैसे कई लोग कह रहे हैं कि आप वो एक प्ले थ्रू और करने का सोच रहे हैं रिमास्टर में. बट मैंने बोल रहा फिलहाल भी क्लाउड बहुत बट मैं बोल रहा फिलहाल हाँ अनरिलायबल तो है. 3155 West 4th Street. Unit to handle code 3, identify. 11K, calling KGP. You gotta help me, officer, please. Slow down. What happened? I was just walking along, not bothering nobody. And these punks jumped me. They knocked me across my mouth and took my money. How long ago was this? Not more than 20 minutes ago, mister. They went that way, down the alley there. Wait here. मेरे को लग ही रहा था. Please, you sucker. That son of a bitch is taking the car! Shit, come on, let's get after him. Wake up, Cole.
Hit him, Cole. Spin him out. लाइक GeForce Now के 4 सब्सक्रिप्शन प्लान एक हफ्ते से अनअवेलेबल है. डोंट गिव अ फक. बस बेकार चीज़ है ना, आपका मतलब पैसा आप दे रहे हो और वो वेस्ट भी कर रहा है एक तरह से. वो खराब लगता है. और कंपनसेशन वगैरह भी नहीं देते होंगे आई थिंक वो. Get in close and steer him off the tar. Now, wasn't that a stupid thing to do? Put your hands in the air! भाई तुझे पुलिस की कार क्यों चाहिए थी लेकिन? Can you drive to this one? Now, I mean, there are actually 5 subscription plan of GeForce now. Currently, you can't buy 4 of them from last week. Okay, God bless you. Thank you, bye. God be with you, lad. That's the cab waiting up ahead. She's not in the car. Don't get too close. She must be inside. We're on the move again, Cole. After her. Don't lose that cab. Whoa, back off before we get made. How many stops is she gonna make? Now would be a bad time to forget how to drive. Shit. Better drop back, Cole. Hammond is full of himself, being this sure he was gonna win. The phone plans also include the free tier. Okay. वो चॉकलेट खा ले, मीठा खाने का मत कर रहा यार. रक्षाबंधन की एक चीज ठीक सही है भाई, मीठा खाने बड़ा मिलता है. Goddamn drunk drivers! God damn it. Everyone's looking at us, Cole. That ought to do it. Now get back in close.
Pull over. She's heading inside. I think I just saw Hammond. I'll tail him. You get... मैं यार टॉयर करके आया थी. आ गया भाई, आ गया. अभी चालू चालू करता. अबे यार हरामी लोग हैं भाई. In there and stay with Candy. Make sure you don't let her see you. Nice. Indecisive. Now? This guy's got a screw loose. This town's dangerous. खैर मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट एक और कौन बढ़िया फार्मर लूं. वो अच्छा आपका One of डीएलसी नहीं है, these मैं भूल गया था. days. That's that cop. Seems like a decent guy. बना मैं आपको डीएलसी वाला आर्मर लेने बोलता. बहुत प्यारा आर्मर है वो, ब्रंटविक आर्मर. ये गेम तो लंबी चल गई. मैंने कहा था थोड़ी बड़ी गेम है ये, मतलब बहुत छोटी गेम नहीं है, लेकिन हो जाएगी कंप्लीट भाई. ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बस आई थिंक 3 दिन 2 से 3 दिन और. अब मैं खुश भी हूँ भाई कि थोड़ी लंबी गेम है. ऐसे छोटी छोटी खेल के वो भी हो जाता है यार, ये कंप्लीट वो भी कंप्लीट. अच्छी बात है थोड़ी लंबी गेम भी. भाई मैंने तुम्हारा वाला वो भेजा है भाई, तुमने जो मुझे भेजा ना डीएम में, मैंने वो वाला सर्वर में भेजा.
सारे लोग खुश हो गए भाई, कह रहे बेस्ट थिंग एडेड इन द गेम, लेट्स गो। Bumrah, this flow for you. Started from the bottom, now we here. Saw his picture. भाई कोई ऐसा गाना तुम्हें पसंद है जिसमें कोई लिरिक्स वगैरह, क्या बोलते हैं, लिरिक्स से ज़्यादा बैकग्राउंड बीट्स या बैकग्राउंड म्यूजिक वैल्यू रखता हो, और तुम्हें कोई ऐसा गाना पसंद है मैं जहाँ जहाँ तुम्हें लिरिक्स से ज़्यादा उसका पीछे वाला म्यूजिक पसंद हो, उसकी लिरिक्स हल्की हल्की होती हैं और म्यूजिक तगड़ा, यस पसंद है। थोड़ा एक नाम बताओ, थोड़े एग्जांपल्स दो, मुझे भी ऐसे गाने पसंद है। Karma by some guy, I forgot the name of. Let me see, wait. हाँ देखो। बैड कर्मा बाय एक्सेल एंड केविन मैकलॉयड के सारे। बट केविन मैकलॉयड का मैंने एक सुना था, तो हॉरर म्यूजिक है। बीस्ट बॉय शिप की अगर तुमने रेजिडेंट इविल 7 सीरीज देखी है ना, तो उसमें वो म्यूजिक यूज होता है। मुझे उसका नाम मैं भूल चुका हूँ पूरी तरह क्या था, बट मुझे बहुत पसंद है सुनना, वो सुना हूँ मैं बहुत पहले। बाकी एक है सफोकेशन बाय क्रिस्टल्स वाला, क्रिस्टल क्राई क्या है नाम मैं भूल गया, उसका सफोकेशन भी पसंद है मुझे। Call an ambulance. Hammond got away. He said... Just try and sit still, Candy. Who shot you? Was it Albert? Car. They're on the way. I have a patrolman searching the depot. The chief's putting together a manhunt for Hammond. He got the money, right? Looks like it. A tough bird, our limey friend. Using his girlfriend as the bag woman and then getting greedy over the split. He won't make it out of town. That's how you see मुझे it? बहुत पसंद है सुनना। I told you that cocksucker was a crook. एलन वॉकर का मैंने वो सुना है, क्या बोलते हैं, आई थिंक वो उसने वो था ना, हाँ फेडेड। Where are you now? Under the sea, under the sea. Where are you now? एलन वॉकर का वो तगड़ा है, अंडर द सी, वेयर आर यू नाउ, फेडेड मतलब नाम है, सॉन्ग का नाम तो फेडेड है। Faded. Where are you now? Under the sea. Under the sea. .32 caliber. One shot fired.
Egyptian theater. So, what now? The theater, I guess. We don't have much else to go on. सफोकेशन अगर तुमने नहीं सुना तो एक बार वो सुनना, बहुत प्यारा है भाई, मुझे बहुत पसंद है। There's a siren for a reason, you know? Poor girl. She didn't deserve that. Poor girl. Half the precinct aren't taking a vacation this year because of her. You need to leave town a lot quicker than that if you decide to screw over Mickey C. This seems like a long shot. Aren't they all? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Under the sea. Under the sea, where are you now? Another dream. The monster's running wild inside of me. I'm faded. सॉरी 5 मिनट के लिए चला गया था, कोई बात नहीं। DLC होता तब भी ब्रूसविक आर्मर का हेलमेट, अरे हेलमेट की नीड नहीं है, मेरे को भी वो हेलमेट नहीं पसंद भाई। देखो मुझे भी वैसे हेलमेट्स नहीं पसंद है चैलेंजर भाई, जो चेहरा ढक देते हैं पूरा, बट नीचे का आर्मर तो अच्छा है ना बाकी शरीर पे। एंड देयर इज दैट्स अ वॉर ट्रॉस्की रीजन। हाँ वो तो है, बट मैंने मोस्ट ऑफ द गेम वही यूज किया था। Car 11, King. Message from the coroner. The cause of death was a knife wound. Repeat, a knife wound. The revolver appears to have belonged to the victim. Son of a bitch. He stabbed her. I thought you said real men use their fists, not guns. That guinea cocksucker. You think he got the money, too? Come on, Roy. We're bringing this whole tragedy to its conclusion. Why'd you kill her, Carlo? Your gripe was with me. She was collecting the money for you. Mickey made it clear it was either me or you, and I intend to keep on living. Imagine you try to kill someone in Kesari, but the enemy suddenly shows gang hand sign and shoots you with a Glock 18. मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। मेरे फर्स्ट प्लेथ्रू में मैंने मोस्ट ऑफ द गेम यूज के आर्मर सेट यूज किया था। ओके She stole those betting slips. She was running out on me. And you were gonna let her? No, I let her collect. I set her up just like she set me up. Just like my manager set me up. Everyone wanted me to take a dive. Everyone wanted me to take the short money. It's for the best kid. You were washed up, kid! You couldn't climb, and you were too brave to sink. You were going nowhere! Maybe, but I had heart. I was a Royal Marine, Carlo. If I lost a fight, it wasn't for lack of trying, and it wasn't for lack of courage. I didn't have much, but I had that. Welcome back, Gaurav bhai. I did it for you, and that's how you repay me! You did it for yourself, and so did little boy. You did it to make a quick buck, and Candy did it to make her dream come true. Blah, blah, blah. I've got the money. All I need to do is get rid of you. It's gonna be a shame, kid, but that's business.
We've heard enough, Arcaro. Put down your weapon. You're making a big mistake, Arcaro. Stay down. Really hurts. Where are you? You limey cocksucker. It's time to come out now, Hammond. Put the gun down, Roy. That son of a bitch owes me a lot of money. Catch. The Scania sails from New York, Hammond. Be on the next train and don't ever come back. Why? Because I was a Marine and I once lacked courage. Everyone deserves a second chance. Now beat it. Fuck you! That English prick is getting away with my money, Phelps! Donnelly and the homicide squad send their best, Phelps. They're more than pleased that you wrapped up the Edwards killing. They're a little mystified about the motive. You have any ideas on that? Crime of passion, sir. Looks like some sort of love triangle between the manager, the fighter, and his girlfriend. No sign of the scrapper? No, sir. Looks like he left town after the fight. Okay. It's homicide's problem now. Good work, gentlemen. Arcaro BKL है कौन है Arcaro? But last thing I was getting ass kicked very frequently because Gru's का armor भी start mid game armor है. फिलहाल मेरे most of the armor pieces come from Warhorse set. To erase me, hermano. कहाँ गया है यू आकुरो बीकेल है अच्छा इसको कह रहे थे समझिए आपने अचानक से लिखा मैं भूल ही गया डुओलिंगो लेसर डन इन 2 seconds 2 minutes 80 seconds Naked City. 187 at 5810 Murata Avenue. Homicide wants you over there. The coroner thinks the broad was whacked using the Army morphine. Don't say anything, Roy. Just get over there.
डुओलिंगो स्पीडरन मार दिया। ओके भाई 18 स्टोरी केसेस कंप्लीट हो चुके हैं आउट ऑफ 26। GTA 6 रेफरेंस कहाँ पे? नेकेड, अच्छा नेकेड सिटी। नाइस नॉवल द नेकेड सिटी भाई। शाम उठने वाली GTA 6 में तो। What's with that getup of yours anyway? I should start introducing us as Detective Earl, and this is my science teacher, Mr. Phelps. Your interest in my appearance is starting to get me worrying. Like it or not, we're a dysfunctional couple now. People judge me with you on my arm same way they would a fat broad with a 5 o'clock shadow. I really hope you're joking, Roy. They spoiled in their own game like short 15 years ago. Nobody realized. OMG भाई रॉकस्टार वाले बहुत आगे हैं भाई अपने टाइम के, बहुत ज़्यादा आगे हैं, बहुत ज़्यादा आगे। रॉकस्टार वालों का मानना पड़ेगा भाई। Cyber leak stopped leak except the post I sent you like no like video or photo leak। अरे ये तो ठीक है भाई, सेक्स वाला जो भेजो इसमें कोई स्पॉइलर नहीं है, मेरे को फन है। उसने तो लूसिया का प्रोलॉग लीक कर दिया, मैंने जिसको भी भेजा पहले पूछ कर भेजा। हाँ सही किया भाई, पूछ कर भेजा क्योंकि स्पॉइलर नहीं चाहिए भाई अपने को। भाई वैसे भी मैं स्ट्रीम करता हूँ भाई, मेरे को तो ऐसे भी वो चांसेस है कोई ना कोई साला आके चैट में स्पॉइल कर ही दे। Hey Central Unit, citizen reports suspicious activity on a trolley car on Fountain Avenue. Stand by for further information. Any Central Unit? Car 11 King, go ahead with the further. LAPD, ma'am. Are you all right? That lowlife! That filthy lowlife! What happened? I was standing ready to get off and I heard a click. His camera. That pervert took a picture of my... up my... Which way did he go? There! That's him! Right there! अबे कौन है ये? Fuck! ये भाई खुलेआम ये बड़वा लड़कियों की फोटो खींचता है, जैसा मैं अभी स्पॉइल करने। भाई ये कैसा बंदा है, खुलेआम लड़कियों की फोटो खींच रहा है।
Hit him, Cole. Spin him out. लूसिया रेस्टोरेंट जेल कर दिया बेटा फॉल्स में. Getting close. Steer him off the tar. Hit him. Clear this asshole off the road. Show me your hands! You're under arrest for public indecency. Oh, Christ. She does not rob a restaurant, bro. I think harder. She does not rob a restaurant, bro. Think. Actually trying to remember. भाई मत बताओ. Let it be a surprise for the game. जब आएगा तब देख लेंगे. I forgot bro, बहुत अच्छा है. Turn left when you can. Take the next left. Next right. Nice emoji. Turn left when you can. Good night. Good night, Gaurav. Bye. Thank you for joining. Bye. आज ऐसे सच में मैंने एक डेटिंग सिमुलेटर खेला. नाम क्या था? Second floor.
Apartment 6, in the back. Thanks. By the way, headphone mic ठीक हो गए. अरे भाई, congrats. That's good, भाई. Mal will be pleased. Well, that's hardly conclusive, given the number of those things we've come across recently. The autopsy will confirm it one way or another. And I realized dating sim are hard as fuck. Why dating is a hard thing. Probably nothing. Bukowski, you made homicide. That I did. Good to see you, Phelps. अरे कैसा है भाई? Want a hug? Or can we get on with it? Relax, Rusty. मेरे पुराने 2 partners जिनके साथ मैंने cases 26 solve years किए. old, fashion model. Found in the tub by the cleaning lady, Mrs. Reynoldson. She called it in. We heard Carruthers thinks... Carruthers likes to make work for people. Overdose of sleeping pills. Falls asleep in the tub. Rest in peace. Case closed. Here, here. Mal is 100% that it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure. Go right ahead. I played for 50 minutes and saw 0 seconds of sex. It was too hard. Why, ऐसा क्या? Phelps? Mal, we've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? No, I took a look. Be my guest. Threesome करने का ऑप्शन नहीं है क्या गेम में? Take a closer look at her head and neck. अबे भाई गे थोड़ी है. Ring. A very unusual ring. I could be wrong, but it looks like a black sapphire. Her neck is bruised pretty badly. Bruising on the forearms, and these look like bite marks. Very good. The eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down, and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning. And spread a trail of barbiturates. Take a look around outside on your way out and see if you can find the syrettes. It would make my theory. And morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find 2 guys who recently bought syrettes and weren't junkies, and you might be onto something. This isn't what we're looking for. Quality English smoking jacket. I don't know anyone under 45 who would wear one. भाई ये लड़की नंगी नहीं है. It's suicide, not murder case solved. हट. मर्डर ही है बेटा. हेलो रैंडम भाई, वेलकम. आवारा टोल 2 खेलेंगे. 90 नंबर को आवारापन 1 नहीं देखा. बैग कहाँ रखूं? अबे यार, ये आवारापन का क्या वो है रिलेशन? मेरे को समझ नहीं आया. Looks like barbiturates.
barbiturates. What else is rattling around in this thing? We should speak to her doctor. Prescribing both drugs would make her life a roller coaster. अभी जाऊंगा डॉक्टर के पास, पहले मैं पूरा अपार्टमेंट अच्छे से चेकआउट कर लूं. Advice? Once you've checked the bathroom, Cole, you better take a look around. This is all top end of town stuff. Gives us somewhere to look. Yes. There's been a modeling assignment. It's a place to start. खाली है. Beautiful girl. Clothes certainly aren't from the Sears catalog. I don't think so. Not sure this means much. No good to me. Nope. I'm Detective Phelps. I'm here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? Virginia Reynoldson, I'm just so shocked. I feel like there's something I should be doing, someone I should call. We can make those calls, ma'am. Who needs to be no... John Wick versus 47. यार, I think 47 ही जीतेगा. John Wick है dangerous, but why 47? John Wick was trained, 47 was born. Difference पता ये है ना कि जॉन विक को ट्रेन किया गया था तगड़ा असैसिन बनाने के लिए. मीनवाइल 47 की एग्जिस्टेंस ही एक तगड़ा असैसिन होने की है. और विक का ये भी है कि विक अक्सर खुले में लड़ता है. मीनवाइल हिटमैन का क्या है कि वो कभी भी ना दो लोगों को पता भी नहीं लगने देगा कि भाई वो किसी को असैसिनेट करने आया है. वहाँ कहना है 47. वही मैं कह रहा हूँ 47 वॉज बॉर्न, मतलब विक क्या है, Vic was made, 47 was born. Agent 47 was born for that purpose. वो नॉर्मल ह्यूमंस की तरह नहीं है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है. Yes, Stealth versus GTA 6.
मेन है ना, जॉन विक एक इंसान ही है एट द एंड ऑफ द डे। वैसे तो मतलब एजेंट 47 भी ऐसा नहीं कोई मॉर्टल है, बट एजेंट 47 जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इज मोर एडवांस ऑलरेडी। विक का क्या है कि विक एक इंसान ही एट द एंड ऑफ द डे, बहुत तगड़ा है। रूल उसका रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, उसकी फाइटिंग स्किल्स टॉप टियर हैं, मतलब उसकी बॉडी सुपर ह्यूमन उस पर है कि मतलब उसने अपनी कंडीशनिंग की है विक ने अपनी उस लेवल की। बट विक का ये भी है ना कि वो खुले में लड़ता है और वो बहुत बार पिटता भी है। वो मूवीज़ में भी बहुत बार मतलब चांसेस की वजह से बचा है बस। एजेंट 47 का क्या है कि भाई वो बंदा ना, वो अपने टारगेट्स का मर्डर भी कर देगा और लोगों को लगेगा कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। एजेंट 47 डिफरेंट बिल्ट है भाई। जेम्स बॉन्ड, ईथन हंट, जॉन विक सारे तगड़े कैरेक्टर है, बट एजेंट 47 अलग ही लेवल पे है। That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town. एजेंट 47 बहुत बार मरते मरते बचा है गेम में भाई, बट वो कैनन नहीं है। मतलब वो मतलब मोर ऑफ गेम प्ले मैकेनिक टाइप है। मतलब कैनोनिकली जो कैनन प्ले थ्रू है ना एजेंट 47 का, वहाँ भाई कोई एजेंट 47 को पहचान तक नहीं पाता। वो तो तुम अगर गलत खेल रहे हो तो वैसा सीन ना बन सकता है, लेकिन कि मैं कैनन प्ले थ्रू की बात कर रहा। Someone has to set her affairs in order. Mr. Henderson, maybe? Who else is there? I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. Would she have killed herself for a man? Miss Julie would never have killed herself. She was a very determined young lady. One of those people who shake the tree for all it's worth. Did Miss Randall have many friends visit? I'm not sure. I only come around twice a week. Men friends, Mrs. Reynoldsson. Spill it. I will not spread gossip about Miss Julia. She was very nice to me. I don't care if she was the Virgin Mary's sister. Who was she humping? You changed the sheets. You're disgusting. If you're going to take that tone, I won't answer any more questions. What was it like working for Miss Randall? Perfectly fine, officer. Do you do the housekeeping on a regular basis? Twice a week since Miss Julie moved here from New York. I know you're trying to protect Julia, Mrs. Reynoldsson, but it won't help us solve the case. Julia can't be hurt anymore. I think our work is done here. That major spoiler from Hitman 3, Diana poisons him and he almost dies, except he was saved by guys who hired to kill him, cause plot armor. Like वो मर ही गया था, उसकी पूरी लाइफ स्टोरी उसके सामने स्मैश। अच्छा, पूरा रेजिडेंट इवल बन जाती है ये। Stefan, Rusty, we'll take a look around outside and then follow up these leads. Can you get some guys to run down the jacket? Stefan and Rusty मेरे You पुराने think Carruthers has called it right? He rarely पुराने gets it wrong. Partner in crime. I don't know. मतलब partner in catching I'm crime. a Galloway. I've met enough girls in my time who can't handle their dope. Bukowski, Galloway, quite the little reunion in there. Almost brought a tear to my eye. They're good police. How would you know? You got promoted so fast you barely had time to learn their names. Let me fill you in. Bukowski's a pushover. Galloway's a drunk. You could learn a thing or two from both of them. Please. They couldn't work a vice case if their life depended on it. I don't see why they'd be any better or worse at it than me. I noticed you said better. Hubris disguised as humility.
Kind of your trademark, don't you think? Why do you always twist everything? Galloway's got nothing to prove. He's been on homicide for years. And he's welcome to it. You're a terrier, Phelps, and that's what I need. Not some old bull... Son of a bitch! पार्टनर इन लॉ, हाँ पार्टनर इन लॉ ये कह सकते हैं। मैं गलत वर्ड निकल जाते हैं भाई क्राइम में, क्योंकि क्राइम बहुत करते हैं। Straight ahead. मेरे मुंह से गलत वर्ड निकल जाता है बार बार। पहला स्टीफन, दूसरा रस्टी, तीसरा ये अपना रॉय। आज मेरा मोटिव था to see how much screen time I could get when I woke up. The phone was dead. Lol. I swear, if we locked up every doctor in this town, Vice would be able to work half days. Here, Stoneman, office 505. Yes, sir, your name? LAPD. We'd like to see Dr. Stoneman. Dr. Stoneman is with a patient. Would you like to wait? No, we wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no need to be rude. Save it, sister. Dr. Stoneman, I have some gentlemen from the LAPD here to see you. Send them in, please. I'll see this patient again after they've left. Your investigation is much more important than my sciatica. I'm just in pain here. Leave me alone. I'm at a loss. Okay, time to grill the good... Dr. Stoneman, we are investigating the death of one of your patients, Julia Randall. I'm very sorry to hear that. Do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? Not if it doesn't compromise doctor-patient privilege, Detective. How well did you know Miss Randall? Barely at all. She'd only been a patient 6 months or so. You didn't like her, did you? Wasn't a question of like, Detective. She was incredibly beautiful. When you looked in her eyes, you knew how a mouse felt before a snake. Not an ounce of warmth there. You wrote Julia Randall a prescription for Benzedrine. How can you account for that? Miss Randall was in the fashion business. She wanted to control her weight. We believe Miss Randall died of an overdose of morphine. You didn't prescribe her anything else, did you? That is a very serious allegation to level at a doctor, young man. ये क्या है? आज मेरा असली मोटिव था कि हाँ I have like... Tell me, do you often lose focus like this?
I have like 9 hours and 30. नॉर्मल है भाई टास्क टाइम में. एम्फेटापाइंस का मतलब क्या होता है? Don't ask, you never find out. Benzedrine is addictive, as I'm sure you know, Doctor. As I warned her, but she was determined. She said she needed it to control her appetite. Sounds like you knew her pretty well. I knew the line of work she was involved in. That'll be all for now, Dr. Stoneman. We'll be in touch. Bye, plus I watched 3 movies today on laptop. Bye. Your eyes are fucked up at this point. The old boy's lying. About what? I don't know. He looked relieved when you said she was dead. That's a strange reaction to have to the death of a young patient. Have you noticed how croakers only pull out the physician-patient privilege card when they got something to hide? Take the next right. What the hell? There are certain things people have a right to keep private. Until it gets in the way of police work. And it's only private when it suits them. And also played game like I told. A couple of drinks and every doctor I've met will spill your darkest secrets in a heartbeat. बैठे ही रहते हो. We might get there quicker if you use the siren. Take the next left turn. आज देख रहा था कि मैक्स कितना टाइम देख सकता. भाई पूरा पागल. Well, hello. What can I help you with today? LAPD, ma'am. I hope I haven't done anything wrong. No, ma'am. We're making some inquiries about Julia Randall. Does she work here? No, I had to let her go. Is she in some sort of trouble? She was found dead this morning. How long had Julia worked as a model? Well, she worked in New York before coming here. She was a very beautiful girl. Could you tell us why you let Miss Randall go? Husbands sometimes come in here with their wives. When Julia Randall modeled, the husbands were often more interested in her than they were their wives' dresses. The wives weren't happy, and neither was I. Did she have any close friends here? Actually, yes. Heather Swanson. Would you like to speak with her? I'd like that very much. Please don't inform her about Miss Randall's death. Very well, officer. Heather, these gentlemen are from the LAPD. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. I understand that you worked with Julia Randall, Miss Swanson? Yes. Julia helped me get my job here. She's not in any kind of trouble, is she? She's a hellraiser, isn't she? Lives a fast life. Oh, no. Maybe Mrs. Stanley would call her that, but I wouldn't. She's full of life, wonderful company.
That's a lovely engagement ring. Do you like it? Henry gave it to I'm me. very interested in engagement rings. Do you mind if I take a closer look? That's some pearl, Miss Swanson. Would have cost Henry a fortune. He must really love you. How did you meet Julia? I was introduced through my fiancé, Henry Arnett. Henry is your beau. Tell us about it. Yes, he is. Henry has a fashion business. He and Julia have been friends for years. Are Miss Randall and Mr. Henderson engaged? Who's he? She was wearing a sapphire engagement ring. Someone must have given it to her. She never mentioned a man named Henderson to me. That's all for now, Miss Swanson. Could you ask your fiancé to visit Hollywood Police Station? It would be very helpful to our inquiry. Now, wait a moment. I don't think I'll pass on that message until you tell me why you're asking all these questions. Julia Randall was found dead this morning. What? Oh, no. Oh, I can't believe it. She was so full of life. 17 घंटे 40 मिनट. Fuck. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? And counting. Messages, please. Yes, Detective. होता कितनी देर है? The coroner's been asking to speak to you. I can connect the call if you like. Please, thank you. Al? Cole, can you get over here? I just finished the autopsy. Sure thing, Mal. We'll be right over. Nice move not telling old Sweet Lips in there about her friend taking the big jump till we were half out the door. Very slick. I figured we'd get more out of her that way. You're learning, Phelps. We'll make a vice cop out of you yet. Take the next right turn. भाई याद आया GTA का एक्सटेंड लुक भी देखा था 30 मिनट का. अरे भाई. Cole, Roy, I have some information for you. You're the only person enjoying this, Mal. Get on with it. The bruising confirms 2 sets of hands, so we have 2 killers. Death was caused by heart failure due to an overdose of morphine. Have you dragged us down here to gloat? We already heard your theory. We agree that she was murdered. Yes, of course. I have something else to show you. All right, Mal, what gives? The dead guy's name is Jimmy LeBlanc, career burglar. He came in this morning. Someone stove his head in with a lump of 2x4. So what? Good riddance. I found 2 Syrettes in his jacket pocket. Wow. Hang on a minute, Roy. We're listening, Mal. No sign of morphine use and no metabolized morphine in his blood. Scratch marks on his face. Which could be from getting his head remodeled. Time of death, Mal. Maybe an hour or 2 after the Randall girl. So you're saying Laughing Boy here could be one of our killers? That's a hell of a long shot. Thanks, Mal. We'll check it out. I found something else.
Final count is 18 hours, 30 minutes and still going. Contrary to what your partner thinks, I think the LeBlanc angle has wheels. You need to follow it. Sorry, I don't play. I don't know if it's significant. His wallet was empty. The only other things he was carrying were the harmonica and the morphine. Carruthers. Yeah, he's here. I'll send him over. They have a guy called Henry Arnett in interview 2 for you next door. Let me know how you get on. Sure, Mel. And thanks for the lead. Sure, Mel. Thanks for the lead. इतनी देर तो मुझे उठे हुए भी नहीं हुआ. Obviously. You need to get back to the case, Detective. I've got reports to write. Arnett is in interview 2, Phelps. Go help him get whatever it is off his chest. बाय बाय. थोड़ा ज़्यादा ही स्क्रीन टाइम हो रहा है. हाँ भाई, सो जाओ. बाय बाय. Mr. Arnett, I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. Thanks for coming in. Call me Henry. It's the least I could do. Terrible news about Julia. How well did you know Julia Randall? Vaguely. I'm in the clothing business, and Julia occasionally modeled for me. And you were close? We were friends. Miss Randall's landlady said she was seeing an older man. Could have been. I wasn't privy to all the details of Julia's private life. Spill it, Henry. You know nothing about a man named Henderson? Yes, you're right. Henderson, yeah. Very distinguished. How about a first name, wise guy? An address, maybe? I'm sorry, I don't. I think he lives somewhere out of town. Somewhere back east. Ever heard of a Jimmy LeBlanc? No. Should I have? Is he an entertainer or something? So you wouldn't have any reason to believe that LeBlanc would be involved in Julie Randall's murder? If this guy is a criminal, he might have been involved. But like I said, I've never heard of this LeBlanc character. Heather told us that you were in fashion. That's right. That bum took a swipe and put him down. Some kind of traveling salesman? Once I got out of the Corps, I used my... You were in the Marines? Sure. I'm proud of it. Fighting 6th. You were in the 6th Marines? Yes. I was a captain. Which company? Various companies. We had a lot of casualties. Which engagements? Okinawa. A couple of other places. That will be all for now, Henry. You've been very helpful. That son of a bitch was never in the Marines. Why'd you let him off the hook? Because we're giving him a couple of minutes before we start tailing him.
Arnett is an amateur. We need to find out who killed the girl. Can you pass this on to Bukowski? Have him check the place out and go through his records. Sure, I'll pass it on. Thanks. Can you also have R&I run the records on a Jimmy LeBlanc and find out who was his last arresting officer? Have them get in touch via KGPL when they have some information. He's in that car at the lights. He was squirming like a worm in there. Don't you love it when they pull the war hero excuse? Actually, maybe you don't. You got a pretty funny idea of what keeping a low profile means, Phelps. I'd have expected a cad like Arnett to be a better liar. Where are you taking us, Henry? Spooked him. Back into traffic, Phelps, now. Can you quit driving like a jackass already? That idiot never stepped foot in Okinawa. Too close, Phelps. Way too close. बेटा आ गया पीछा करके He needs money and fast. Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him, see how he intends to spend the money. Move in. Can't risk losing the trail. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Too much slack. Gotta get closer. He needs money and fast.
Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him, see how he intends to spend the money. Move in. Can't risk losing the trail. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Too much slack. Gotta get closer. That's right, Mexico City. One-way ticket, please. Next available seat. That would be 1 day from now. Is that okay? It's going to have to be. LAPD, the man who just came in here, he bought a ticket? Yes, sir. To Mexico City, tomorrow night. If you hear from him again, don't mention this conversation. What have you got? He bought a ticket from Mexico City. Tomorrow night. That's good. But this is better. My God. It's Fabergé. Should have seen the look on the pawnbroker's face when I told him to hand it over. The guy who owned the joint thought it was worth at least 10 large for a cigarette case. Arnett only got 600 clams. Seems like a decent guy. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? Messages for me, please. Yes, Detective. Detectives Bukowski and Galloway request you return to the Hollywood station.
They have information in the Julia Randall case. Any luck with the arrest record check on Jimmy LeBlanc? Yes, Detective. Jimmy LeBlanc's last arresting officer was Patrolman Fred Wallace. He's posted the Hollywood 9th Beat Sunset Boulevard between Gordon and Wilcox. Thank you. A one-way ticket to Mexico. Old Henry's looking as guilty as a dog next to a pile of dog shit. What's his motive? I can think of a few, but I'd put my money south of the belt. One guy plus 2 dames always equals problems. Straight over the next intersection. Straight on. Take the next left. Straight through the intersection. Come on, let's give him a hand. Right behind you, Wallace. Detective Phelps. Wallace, go left. I'm going right after this little prick in the alley. Throw out the guns. Pokes his head out, we'll step on him. Your move, mister. Come get me. Clear, go! You're pretty brave for it. I got you now, motherfucker! Stay in cover! Move, I got you! Thanks. Outstanding warrant, armed robbery. Knocked over a drugstore back there, and it looks like he brought his whole posse with him. Bad luck for them. They're all yours now. We need some information. Ever heard of a burglar goes by the name of Jimmy LeBlanc? Sure. We nabbed Jimmy on a burglary beef a couple of years back. They cut through a music shop and into a jewelry store. He got 4 years. I miss his partner, though. His partner? Big guy. I had him cornered, and he picked up this huge display case and threw it out a plate glass window. Then he vaulted out of there like something out of Barnum and Bailey. Got away. I would have had him, except for LeBlanc yelling, "Run for it, Willie!" And you think he was an acrobat of some sort? More like a strongman, a wrestler, or a boxer, that kind of thing. Thanks. You've been a big help. You haven't done too badly yourself. You're suggesting LeBlanc is still working with Willie? A strong man held down Randall while someone administered the morphine. Someone with muscle opened up LeBlanc's skull. Could be. Turn back, you're going the wrong way. Look out!
Take the next right. Keep going straight. Straight through the intersection. Straight on. Go straight at the next intersection. We caught up with Mao. He's given us the dope on LeBlanc. He worked burglaries with a big guy. Goes by the name of Willie. He might be our killer. Can you work boxing gyms, the Y, promoters, that kind of stuff? Since when have you started giving orders, Phelps? And where's the burglary angle? There was no sign of a... That's where our net comes in. Next stop, we speak to Lacey about a list of recent burglaries. The guy's a bum. His office is a front, and he's behind on the rent and his phone bill. And he's skipping town. Tomorrow. Let's get him in and beat it out of it. Do you want to bring in the killer, Rusty? It could be too smart for your own good, Phelps. We've been talking about that, haven't we, Roy? Stefan? Finbar? Sir, I need the contraband list. Items stolen over the last year. Hang on, I'll dig out a copy for you. Here you go. Thanks. Is the cigarette case on there? Seems Julia wasn't the first bored society girl to hide her bennies in that pillbox. Even the engagement ring was purloined. Our net is a cad. It's here. Arnett must be out of his mind trying to move this while under a murder cloud. So you and Rusty have been having discussions. Anything you would like to tell me, partner? Phelps, don't be so touchy. Rusty had his best ever clearance rate working with you. Even if the cases he worked on can't be discussed. We were just comparing notes. You're a Booneroo case man, Phelps. One of the best I've ever seen. Thanks. You gotta learn to take a compliment, Phelps. A hopped-up model, a cad, and a circus freak. Only in L.A. Fairy tales of the rich and famous. Left turn here. You idiot! More like pathetic tales of the desperate to be rich and famous. Junkie Goldilocks and the Three Bears. Arnett, LeBlanc, and Willie. Don't you go putting the pieces together again before they fit. Christ! Don't you go putting the pieces together again before they fit, Phelps. Listen to your old pal Rusty. Or should I say Finbar? I wouldn't call him that if I were you. What do you care? It doesn't sound like you're the top of his Christmas card list. He gives everyone a hard time. That's just how he is. Whatever gets you through the day, Cole. Open your eyes! That will be all.
Nice house. LAPD, ma'am. Is Mrs. Eavestrom in? She is. Would you follow me, sir? I am Mrs. Eavestrom. How may I help you? We appear to have recovered some stolen goods that belong to you, ma'am. Yes, of course. That terrible burglary. Would you like something to drink? No, thank you, ma'am. We have some questions, if you don't mind. Why would I mind, Hello, young hello. man, if you are returning 43 pieces of my property? Okay, before we get down to that, I'll have a scotch. Thanks, straight up. Maria, can you get the detective a drink, please? Can you describe to us what was stolen? It would be easier to describe what wasn't stolen, detective. A priceless tiara that has been in the family for 50 years. A Fabergé cigarette case that was worth $25,000. We recovered a black sapphire ring. A beautiful piece. It belongs to my daughter. What can you tell us about the burglary? That terrible night. At least a year ago. But let's not go into that. Let's talk about what you've recovered. I get the sense that you're worried about something, Mrs. Eavestrom. I have already received the insurance claim, detective. Is there any way we could keep the return of these items discreet? That's about it for now, Mrs. Eavestrom. The department will get in touch and let you know how you can recover your valuables. You have only mentioned a few of the items that have been stolen, detective. What else has been recovered? You see, Phelps? That's why you get the drinks in early. Hello, Mother. Hello, detectives. What is going on? We'd like to ask exactly the same question. You have met my daughter? This morning at work. Oh, mother and father divorced. I took my father's name. The detectives recovered some of the things that were stolen, darling. Well, what did you find? A sapphire ring on the corpse of Julia Randall. What are you talking about? Your engagement ring, Miss Swanson. Would you be surprised to know that it was part of the proceeds of a burglary? That's an outrageous allegation. Yes, it is. I suggest we go straight to Henry Arnett's place and sort this mess out. What are you doing? We're missing something here. Arnett is obviously arranging the burglaries. That's my fiance you're making scurrilous accusations about. And Randall was obviously his partner. But neither of them are the type to creep apartments. You're being ridiculous. Both of you. There's a very good explanation for all of this. Put a sock in it, sister. You're being played for a patsy and you're not even smart enough to see it. Keep straight. You're gonna go right up ahead. I have phone charge. Let's go.
Straight over. Take the next right. Left here. Take a left, here. Turn left when you can. Straight ahead. Come on, sister. Let's find out who your fiancé really is. Welcome, sir. I'm sorry, are you a resident? LAPD detectives. We're here to speak to Henry Arnett. Oh, Mr. Arnett? Apartment 30. You can take the lift. Thank you. बिल्डिंग्स कितने अच्छे से डिजाइन करी हैं इन्होंने। Well, isn't this just nice and awkward? Stop! LAPD! Don't kill him, Cole. This guy's our case. Go on, Put get your out. hands in the air! Give it up, LAPD! Don't make me chase you! Looks like he got you good, Phelps. Yeah, he really packs a wallop. How did I get back here? Under your own steam, miraculously. You came in through the window, said hello, and then keeled over. How was Arnett? He's coming round, too. He's all hopped up. Good time to get some answers. You missing something, Henry? You told Heather you're honeymooning without her? Vacheron Constantine. That's an extremely expensive watch, Henry. A graduation present from my parents. We know all about the jewelry ring.
You and Randall and LeBlanc and Willie doing the legwork. I'm in the fashion business. Miss Swanson might be gullible enough to believe your story, Arnett, but I'm not buying. You're involved in a burglary scam, and so was Julia Randall. I'm a legitimate businessman. I can't speak for Julia. Why did Reed and LeBlanc kill Julia Randall? I wanted to stop, to get out of that life. I was going to marry Heather if she'd have me. Julia told the others that they were out, that she was going to create a new gang. You're lying, Arnett. I think you ordered them to kill her. It was made to look like suicide, and when the coroner saw through that, you knew it was time to run. I told you I was involved in the burglaries. I had nothing to do with Julia's death. Why would I need to run? That's some story, Detective. But you can't prove any of it. Who is Henderson, and what is his involvement? Tell them what you know, Henry. I'll stand by you if you'll only tell the truth. There is no Henderson. Give it up, Arnett. You're facing the gas chamber. Give the judge some reason to commute. You still don't get it, do you? Julia entrapped everyone. She was so beautiful, so goddamn cold. Henry Arnett, you are under arrest for burglary and for the murder of Julia Randall. Henderson is Stoneman, all right? I'm not the guy you want. Go talk to the good doctor. Oh, we will, knucklehead. Meanwhile, we're fitting you for convict stripes. I guess the wedding's off. He only robbed her mother and killed her best friend. Cut the guy some slack. It's the next left. So how does the doctor fit in? That's what we're about to find out. Maybe we should ask him to give you a quick once-over. That meathead gave you one hell of a pasting. I've had worse. You should have seen yourself staggering back in there like a drunken sailor. Next time you can take the runner, boy. I didn't box in the Marines, though, did I? I should have never told you that. There goes a week's wages. गेम साउंड ज्यादा है। नहीं भाई मेरा ज्यादा सही है भाई। मैं बहुत दिनों से इसी साउंड के साथ खेल रहा। Time for the doctor to give us something to make this all better. भाई मैं इतने दिन से इसी साउंड के साथ खेल रहा है ये गेम में। सबको आवाज क्लियर सुनाई देती। नो वे। Hang on a moment, sister. Tell him it's Henry Arnett. And tell him it's urgent. I can't do that. Tell him, or I'll charge you with obstruction of justice. Doctor, I'm afraid Mr. Arnett is here to see you, and he says it's urgent. Send him in. साउंड इफेक्ट वॉल्यूम थोड़ी never सी ज्यादा है। come. Tell us the अरे truth, मेरी doctor. क्लियर आ रही ना, बस कोई दिक्कत नहीं।
so glad you came. Prison will be better than insanity, and I'm already half insane with grief. Do you know that I loved her? I ruined my life for her, and yet I still love her. Will you testify in court that Arnett and Randall did these robberies? They organized the robberies. Julie would get the names of the guests attending my wife's parties. Didn't matter how much money I showered upon her, it was never enough. She never really cared for me. Doctor, I'm afraid you're under arrest. The practice. You'll call Dr. Gerard. No. Please don't cry. I want to see no one. Not my wife, or my children, nor my friends. And I don't want a lawyer. Just lock me up and throw away the key. What have I done? Didn't see that coming. बंदा सुसाइड कर दिया. बंदा डिप्रेशन में था भाई. Operator, give me R&I. Putting you through now. I need an ambulance and the coroner immediately to the offices of Dr. Harold Stoneman, 1646 Ivor Street, Hollywood. En route, detective. You have a message. Detective Bukowski says the suspect is named Wilson Willie the Wolf Reed, former wrestler. Last known address is an apartment building at the corner of Hollywood and Vine. Detective Bukowski says to meet them there. On our way. We have an address for the runner. Let's try and wrap this up then. That old boy really fell for that broad. She was incredibly beautiful, Roy. You throw it all away for a woman? Life has a way of making you pay for your pride. You're quite the romantic, Phelps. Stick with the percentages. Broken hearts are for chumps. You're talking from experience. I certainly am. Oh, I like women as much as the next guy, as long as they're in their place and doing what they're told. भाई डिटेलिंग है, देखो पॉप आया है वहां पे. I hope you got some money saved up. The Broadway, Hollywood. He's around here somewhere. A big guy. Neighbors say he always wears basketball shoes and a cream jacket. And get this, the kids around here say he plays the harmonica. Find the game well and have the commander set up a dragnet. We want the area closed off. We'll take this out of the street. A harmonica-playing wrestler. That's a weird one. Think he knits as well? Just keep your eyes open and your mouth shut. We don't want him to bolt on us. Isn't that the...
extra, read all. Any ideas? Reed killed the broad. We go to his apartment and wrap this thing up. अरे तो हट ना. Wilson Reed, LAPD, give yourself up. पकड़ो साले को. Wilson Reed, LAPD, give yourself up.
Hold it. He's got to be around here somewhere. No place to go unless he grew wings. There he is. Waste the son of a bitch. Son of a bitch really picked a spot for it up here, didn't he? Julia Randall's folks are flying in from New York tomorrow to claim the body. I saw her on the slab. So perfect. Looked like she was made of porcelain. She really made an impression on me. Well, you had that impact on a lot of men. Christ, it's cold. You guys did good work here today. Roy, I think you should buy your brother officers a drink. Do you now? That's very generous of you, Lieutenant. भाई हो गया आज के लिए इतना ही कल करूंगा कंटिन्यू आगे लंबे लंबे केसेस हैं गेम में We're being overrun. We have to get off of this hill. That's one of our 50 cals still firing, Cole. The 22nd are still fighting. It's over, Cole. Looks like you're one of the lucky ones. Say goodbye to your friend Hank, Jack. He was your friend too, Cole. Is this how you're going to leave him? Are you wounded? Not a scratch, Kelso. Well, get up and get out of that fucking hole! Find a stretcher while you're at it so we can get him out of here. Who's the senior officer here? I guess that's you, Cole. You were up here all night? Yes, sir. And your command? Gone, sir. Sorry to hear that, son. God damn it, we have beaten these bastards back. It's the beginning of the end, and it was one here. You're a goddamn hero, son. What's your name? Lieutenant Phelps, sir. I'm recommending you for the Silver Star, and promoting you to First Lieutenant. Manifest destiny. Earl Phelps, a shooting at the 111 Club, 6232 Hollywood Boulevard. Sounds like a homicide beef. 2 of the dead guys caught in the crossfire were carrying Army surplus morphine. Get over there before homicide tramples all over the place. We already cleared that up. Judge in Pasadena took the big sleep yesterday. He had a personal stash of 20 cigarettes. Appears we didn't get all of it. I didn't deserve that. Stripped off me at the grand jury. Case got thrown out.